Hello. Welcome back to Almighty Blues FC, a fan channel for all to see. और yes, today's topic is Chelsea, obviously, because जो हुआ है भाई सुबह, everyone watching, pretty sure everyone knows by now. हाँ, बहुत early in the morning था, बहुत लोग नहीं थे live when I was live, so that's why I'm here, so that I want to kind of discuss एक proper breakdown करना है. क्या है? प्रॉब्लम क्या है चेल्सी में? Is it just one problem? Is it multiple problems? Or are they excuses? Let me know in the chat, or we'll break it down one by one. break करेंगे. और भाई सब लोग लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए भाई, because this was something जो मुझे सुबह से kind of I don't know itch कर रहा है, क्या कर रहा है. I had to come and share my thoughts. हाँ, definitely we'll get on a panel as well. Chelsea panel भी लाएंगे in the future, but आज I just wanted to discuss with you all and share my thoughts. We detail में क्या प्रॉब्लम है भाई, हर एक प्लेयर में देखेंगे, हर एक बेसिकली एस्पेक्ट देखेंगे चेल्सी का जो चल रहा है, और वील काइंड ऑफ कंपेयर विद अदर टीम्स. और यस, ग्रेट एल क्लासिको मैच हुआ और दैट वाज वन ऑफ द थिंग्स जो मुझे लग रहा था भाई, और भी यार व्हाट इज मिसिंग इन चेल्सी. तो यार लॉट ऑफ पीपल आर इन द चैट. होपफुली यू गाइस लाइक द स्ट्रीम और शेयर कर दीजिए सो दैट वी हैव इवन मोर पीपल, और ज्यादा डिस्कशन हो तो ज्यादा बढ़िया है. आई वुड आल्सो वांट बहुत सारी न्यूट्रल्स तो और भी बेटर है, बिकॉज आई रियली वांट टू नो योर ओपिनियन. या पोल लिया है तो सागनिक बोल रहे ऑल द 4 ऑप्शंस, प्रीटी श्योर. लेकिन वही है, एक कहीं से शुरू होती है, वो प्रॉब्लम क्या है वहां पर हम जाएंगे. और इज देयर अ सोल्यूशन, इज देयर अ क्विक फिक्स, दैट्स व्हाट हम बात करेंगे. इज देयर अ ब्लेम गेम गोइंग ऑन, क्या चल रहा है. Adarsh in the house. Adarsh, thank you for joining as always, and of course a member of Almighty Blues FC. Bhai, big respect to you. And yes, Bilkul Lumanu as well. And again, people, remember to hit that like button. Please, absolutely. Or yes, I had already planned this 1 घंटे पहले. I could have come 1 घंटे पहले, but I was kind of unwell, so I was kind of just taking some treatment. So hopefully you guys are bearing with me with my health. Hopefully I will be fine. But 1 घंटे पहले मैंने करना था, लेकिन I am kind of doing it. It was already planned. So hopefully, by everyone, come on. Hi to Darren as well. Big up, bhai. Big up. Obviously, Chelsea fan in the house. Madrid, Barca fan. Congratulations on another trophy. But you know what? That is something जो मुझे दिलाया याद कि भाई प्री सीजन इज नॉट जस्ट प्री सीजन. मैं बोलूंगा यस, आप लोग बोलोगे यार डेफिनेटली यार इट्स जस्ट प्री सीजन. कम ऑन, आर्सेनल है बट इट्स प्री सीजन, डजंट मैटर. बट आई थिंक द एल क्लासिको मैच शोड मी एक पैशन होता है, एक होता है डिटर्मिनेशन, एक होता है एप्लीकेशन. भाई ये सब आई डोंट नो, मतलब एक दीज आर बेसिक थिंग्स एज अ प्रोफेशनल, एज अ स्पोर्ट्स पर्सन. आप बेसिकली, मैं बोल रहा हूँ ना, मैं गली क्रिकेट या गली फुटबॉल में खेलता हूँ. दैट इज व्हाट समथिंग दैट मैं हारना नहीं चाहता हूँ. यू डोंट वांट टू लूज. वहां पर लड़ाई हो जाती है यार मेरी. व्हाई? बिकॉज यू डोंट वांट टू लूज. वर चेल्सी दैट? नो, दे वर नॉट दैट. और आज का मैच की नहीं बात करेंगे, आज का मैच तो है ही खैर, बट एंटायर यूएस टूर, entire basically last 5 years in the league, what has been happening? There is a problem. You know what, मैं क्यों बोल रहा हूँ? I know every day is not a Sunday आप बोलोगे, लेकिन भाई एंटोनियो कॉन्टे came in 2017 और क्या किया था उन्होंने लीग में, क्या किया था. जोसे मोरिन्यो came back in 2014-15 और क्या किया था उन्होंने. तो there are possibilities. Yes, Thomas Tuchel won us the Champions League, brilliant, बट इज इट बेसिकली कवर कर रहा है हमारे स्कार्स को? बिकॉज वो उस आड़ में जी रहे भाई, हमारे प्लेयर्स उस आड़ में जी रहे. दैट इज व्हाट इज हैपनिंग. But anyway, let's go to all the comments as well. Hello to Parth and Yatin. Yes, too frustrating. Timo out ASAP. Get a new attacker who wants to play for for the badge. And the reason we are not getting proper success is we are not giving managers the players they need in their system. Still remember after winning EPL, Conte wanted Lukaku, VVD, Alexandro. Yeah, fair enough. Change of ownership and failing to get the number 1 transfer targets does lower the morale of the team. Lekin that is the thing I'm saying, bhai. Matlab Manav, I understand that. But a big respect to you as well, Darren as well, bhai. I understand all these problems. I understand these problems. Lekin is it basically taken as an excuse by the players of Chelsea Football Club? Player power is a thing. मैं कल तक बोल रहा था, and again I know Timo Werner पे comment है, and again I'll try and take as many comments as possible. देखो, Timo Werner, I always said the problem with him is not the commitment. The problem with him is not the commitment. The problem with him is the footballing IQ उसका थोड़ा सा कम है, उसका थोड़ा सा धीरे है footballing IQ. That is the problem. So he's not able to apply what he wants to do on the pitch a lot of times. हाँ, runs brilliant. तो आप बोलोगे वहां पर भी IQ चाहिए, लेकिन नहीं यार, फुटबॉल के साथ में क्या करता है वो? When he has football on his feet. लेकिन आज
the major problem was not just that, even his application, even his determination was a problem. मैं इसलिए डाला उसको थंबनेल में. टीमो वर्नर एंड मलंग सार, यू रिमेंबर एक एपिसोड, पता नहीं यार आप लोग ने देखा है कि नहीं, दैट वीडियो इज गॉन वायरल. तो बेसिकली मैं दिखा नहीं सकता बिकॉज ऑफ कॉपीराइट इश्यूज हो सकता है, तो दैट्स व्हाई आई एम नॉट शोइंग दैट वीडियो. सो बेसिकली क्या है ऑन द पिच, मलंग सार, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वाज सरप्राइज कि भाई मलंग सार केम ऑन बिफोर कुलीबाली, वो फर्स्ट सरप्राइज तो वही था. ठीक है, मलंग सार केम ऑन और मलंग सार प्लेड अ बॉल. हाँ, थोड़ा सा बेसिकली यू वुड से कि थोड़ा शॉर्ट पास था, लेकिन टीमो वर्नर क्या करना था, थोड़ा सा और पीछे आना था, लेना था बॉल को और एटलीस्ट ट्राई करना था. टीमो वर्नर डिड नॉट इवन मूव. ठीक है, और उसके बाद क्या, मलंग सार उसको दिखा रहा है, भाई क्या कर रहा है तू, क्या कर रहा है, मतलब ना सो मत तू. और वहां बैकग्राउंड में थॉमस टुकल दिख रहे थे, फिंगर ऑन लिप्स, मलंग सार को बोल रहे थे मत बोल, उसको करने दे जो करना है. तो देयर इज समथिंग रॉन्ग, प्रिटी श्योर देयर इज समथिंग रॉन्ग, यू कैन नॉट कवर इट अप. और यहां मैं इतना रिएक्ट क्यों कर रहा हूं, ऑलरेडी मैं इतना रिएक्ट क्यों कर रहा हूं, बिकॉज किसी ने सुना है थॉमस टुकल का पोस्ट मैच इंटरव्यू? डिड एनीवन हियर दैट पोस्ट मैच इंटरव्यू? मैं मतलब दैट वाज वेरी वेरी टेलिंग, मेरे लिए बहुत एकदम प्रॉपर टेलिंग था वो. आई डोंट नो व्हाट टू से वहां. लाइक अगेन मतलब वील कम टू प्लेयर बाय प्लेयर, वील कम टू स्क्वाड में भाई क्या रहना चाहिए क्या नहीं रहना चाहिए. ट्रांसफर्स, या वी कैन ऑलवेज टॉक ट्रांसफर्स, वो तो है ही, लेकिन जब कमिटमेंट की प्रॉब्लम आ जाती है ना, देयर इज अ मेजर प्रॉब्लम. और यही प्रॉब्लम हुई थी अनफॉर्चुनेटली अंडर मोरिनियो सेकंड सीजन इन 2016. 2018 में अंडर कॉन्टे जब शुरू किया था हमने, और अरे 2018 के एंड में ये सब चीज लग रही थी. तो इज प्रॉब्लम अगेन येट अगेन द कोच? नहीं, आई वुड से स्ट्रॉन्ग नहीं. द प्रॉब्लम इज द डेड वुड इन माय ओपिनियन. द प्रॉब्लम इज द डेड वुड. ट्रांसफर्स, yes we can say that, ownership we can say that, but मेरे ख्याल से those are all excuses. Yes, it matters, certainly matter करता है, these are all young players at the end of the day, but for me these are more excuses. You need to do your job, boss. You are getting 285k a week, Mr. Timo Werner. Anyway, and I'll come to each and every player, don't worry about that. Everyone supported you, no problem man, no problem. Gagan, much love. अगेन आपको सोचना है कि यार मैं आप पे बोल रहा हूं तो मैं क्या ही तो बोलूं, लेकिन आई नो आई एम whom I'm pointing towards. I will not come back to that, but I love everyone who supports me, absolutely. And supporting every content creator is also very, as in suggested by me always, and this is not something मैं आज बोल रहा हूं, हमेशा बोलता हूं. Okay, yes, absolutely Manav, thank you as well. Let's get to 5k. If Werner wants to go, tell him to go. Ziyech wants to leave, but at least do not ruin our morale. You know what, अगेन प्री सीजन है और व्हाट नॉट. जियश का नाम लिया ना डेरेन, और मैं मटाटा यूनाइटेड, आकाश वर्मा, निखिल तिवारी, सक्षम, प्रणव, यार सबके कमेंट्स मांगूंगा. और थैंक यू फॉर जॉइनिंग भोगेंद्र, डेमिन डफ, पीबी टॉक्स ऑफ कोर्स, सीएफसी ब्लूज, एवरीवन आई कम टू योर राइट. जियश, ओके, एक पॉइंट है, चलो मैं बहुत बार बोल रहा हूं, मैं प्लेयर का प्रॉब्लम है, प्लेयर हैज टू अप्लाई, यू कैन नॉट काइंड ऑफ स्टे बिहाइंड दीज एक्सक्यूजेस. व्हाट अबाउट हकीम जियश? हकीम जियश, हाँ, मैं बहुत सारे लोग बोलते हैं भाई ही डज नॉट अप्लाई हिमसेल्फ इनफ ऑन द पिच, बट डजंट ही हैव अ रीजन एज वेल. यहां पर वापस हम टुकल पर आते थोड़ा. भाई हमने फर्स्ट 2 मैचेस ऑफ प्री सीजन वी प्ले 3 द बैक. हकीम जियश स्टार्टेड. हकीम जियश का बेस्ट फॉर्मेशन में बेस्ट परफॉर्मेंस कब आता है? इन 4 एट द बैक, राइट? और रादर जब हम 3 अप फ्रंट खेलते हैं, 4-3-3 में आता है, राइट? और 4-1-4-1 आप बोल सकते हैं, व्हेन ही प्लेज एज अ विंगर, दैट इज व्हेन हकीम जियश इज बेस्ट. हाँ, डिस्पाइट दैट फर्स्ट 2 गेम्स में ही एक्चुअली इम्प्रेस्ड मी एट लीस्ट. आई डोंट नो व्हाट यू गाइस. आज के दिन में वी स्टार्टेड 4 एट द बैक. फॉर पीपल हु डोंट नो, हम लोग शुरू किए थे 4 एट द बैक. फर्स्ट हाफ 4 एट द बैक खेल रहे थे हम लोग. वी प्लेड अ 4-2-3-1, ठीक है, बट हकीम जियश वाज़न्ट देयर. अभी जब हकीम जियश फाइनली आता है, व्हेन ही कम्स, जब वी गो 3 द बैक. तो आई डोंट नो वेदर इट्स अबाउट लक, वेदर इट्स अबाउट बेसिकली भाई हकीम जियश को अनफेयर चांसेस मिले हैं, आई डोंट नो. और आप बोलोगे yes it's about the commitment, it's about you have to give in no matter what the formation is. I agree with that. Lukaku was an example, but my clear point here is bhai Hakim Ziyech has certain virtues. You got to use him for his virtues. He's one of the most creative players in the entire bloody squad. He's one of the most creative players, and you're not using him. So wahan par bhi there are issues. There are issues certainly. यार there were only 2 kind of chances created last match में जो हम हारे थे, right, on penalties, proper chances, and both were from Hakim Ziyech. So there are a lot of issues. Again, I'll come to each and every player, and of course even the people who are out of Cobham,
How did they perform? Do they have a role? What role do they have? Is the coach a problem? Is them a problem? We'll come to them exactly. Yes, of course, it's a very long season, Fahim bro. It's a very long season. Again, big up to you as well. Matlab, again, it's seeming like that. Again, we are going to be ending up like a cup team. That is what it's seeming like. What the hell has happened to Chelsea? Man, I am telling you, like, the thing is, it is not about just the transfers, it's not about the ownership. Each and every player needs to give it all, whether it's pre-season, whether it is, in Cobham, training pitch, whatever. भाई ट्रेनिंग पिच में आप देखो, मतलब आई नो थोड़ा ओल्ड स्कूल हो रहा हूँ भाई, जेनारो गटूसो, could you have imagined him even in training pitch taking it like a casual park game? That is what the mentality we need. Roy Keane, that is what the mentality we need. We need fighters, we need warriors. एंड वी हैव गॉट रिड ऑफ वन वॉरियर. आज दिखा भाई पिच पर, कौन से पिच पर दिखा, लेकिन वो दिखा लास वेगस पे. दैट वाज मिस्टर रूडिगर. रूडिगर वाज अ वॉरियर. रूडिगर वाज अ फाइटर नो मैटर व्हाट ही परफॉर्म्ड. ठीक है, दैट इज द काइंड ऑफ इल्क ऑफ प्लेयर वी नीड. वी नीड मोर स्किल्स बाद में भाई. वी नीड प्लेयर्स हु आर मोटिवेटेड. हाँ, डेफिनेटली आप बोलोगे यार इतने सारे प्लेयर्स हैं, पीपल डोंट नो द फ्यूचर, व्हाट नॉट. These are all bloody excuses, man. आप when you are having, अभी यार सच में बोलिए everyone, is the starting 11 of Chelsea carved in stone? अगर वो है carved तो मैं समझता हूँ, लेकिन भाई इतने सारे places है in the starting 11 जहां पर the position is not secured. So isn't it imperative for a Malang Sarr, for a Ethan Ampadu, for basically anyone who's coming in, Levi Colville, be it in training, be it off the pitch, your media mein jo bol rahe, be it Mr. Broha, anyone, is it not imperative कि भाई you try your level best right now, whatever it takes to be in Chelsea Football Club, you can become a star of Chelsea for years to come. वो हो सकता है. You know that Chelsea में इतने सारे changes नहीं होते once you become that superstar. But anyway, Chelsea desperately need a complete striker. Chances are created, but sucks in finishing. Today, Sterling, Sterling did not do well. But again, more than that, मैं इस पर भी आऊँगा. Why it is a problem? Yes, I would say chance creation भी problem है. खाली फिनिशिंग नहीं है. चांस क्रिएशन क्यों प्रॉब्लम है? क्योंकि हमारे जो मिडफील्डर्स है आज जो खेले, फॉर एग्जांपल एट अ सर्टेन पॉइंट वो खेले विद गैलेगर एंड जॉर्जिनियो. ठीक है, वाइल उनका परफॉर्मेंस अच्छा था, मैं तो ये बोलना चाहूंगा. अगेन आई एम काइंड ऑफ स्टिकिंग टू दिस मैच अभी के लिए, लेकिन जनरली आप देखो ना, आप देखो वी डोंट हैव एनी बॉल कैरियर अपार्ट फ्रॉम कोवाचिच. वी डोंट हैव एनी बॉल कैरियर. वी डोंट हैव अ पासर इन द फाइनल थर्ड एक्सेप्ट फॉर मे बी अ जॉर्जिनियो वेरी ओकेजनली फ्रॉम मिडफील्ड. ठीक है, लेकिन वो इतना फ्रीक्वेंट नहीं होता है. अभी गैलेगर आप बोल सकते हो, यस ही कैन बी द डिफरेंस मेकर, ही कैन बी अ ग्रेट नंबर 6, लेकिन आई डिसएग्री. डिफेंस, आपका डिफेंस कहां से शुरू होता है? डिफेंस स्टार्ट्स फ्रॉम द फ्रंट. अग्री एवरीवन? डिफेंस स्टार्ट्स फ्रॉम द फ्रंट. गैलेगर फॉर मी नीड्स टू प्ले अप फ्रंट इन अ मेसन माउंट काइंड ऑफ पोजीशन. हाँ, यू कैन नॉट प्ले बोथ, लेकिन हाँ, इफ सो बी इट, एक को खेलो भाई. फॉर मी हिज वर्च्यूज आर बेस्ट कि यार वो अप फ्रंट प्रेस कर रहा है, वो बेसिकली सेकंड बॉल जो होता है उन पर शॉट्स ले रहा है. दैट इज व्हाट गैलेगर्स बेस्ट वर्च्यू इज. We have seen that he's more of a number 8. He's not a number 6. He can play number 6, but that is not what he is. So when you have that, अच्छा चलो आज का मैच में for example they did well in my opinion, Jorginho and Gallagher together. लेकिन problem was that वही है कि यार because we were playing 4 at the back ना, क्या होता है, चालोबा they made one mistake. Obviously चालोबा again Cobham sexual से भाई चालोबा को chances देना ही पड़ेगा, ऐसे ही सीखेगा. Fair enough. But again man, मतलब these mistakes are time and offense continuing. एंड एक मिस्टेक होता है मिडफील्ड में, खाली दो ही लोग थे, तो इफ देयर वाज अ थर्ड पर्सन, मे बी दैट थर्ड पर्सन कुड हैव कवर्ड इट, दैट मिस्टेक. और दैट इज व्हाट आई एम सेइंग, व्हाई डिडंट वी एक्चुअली गो 4-3-3 इवन इफ यू आर गोइंग फॉर द बैक? बिकॉज़ हमारे पास है पर्सनल भाई. माउंट एंड गैलेगर आर योर टिपिकल नंबर 8 इन अ 4-3-3. यस, जॉर्जिनियो इज नॉट योर सिंगल पिवट भाई, लेकिन इटली के साथ यूरोज जीता है उस पोजीशन में. So there is something more than just the players or just the manager. There is something more there. It is just the environment, the atmosphere is not what it should be, in a pre-season. That's what it looks like. Chalobah clearly isn't ready. Mendy is still poor with his feet. Malangsa looks a walking disaster. Again, in Mendy's defense, मैं बोलूंगा भाई, he actually kept us in the game so that we can try and make a comeback, at least first half में. लेकिन हाँ, I get your point. Very bad distribution, very bad, as in play with the feet. I 100% agree. PB talks 100% agree. One question, अगर माउंट को
सेकंड स्ट्राइकर का रोल दिए तो ही कैन गेट यू गोल सिमिलर व्हाट चेल्सी हैड ड्यूरिंग लैम्पार्ड. वेल भाई, I kind of feel that Mount again. Aj, for example, he was playing that number 10 role. Did he do well? No, he didn't do well. Yeah, maybe it is an off game. Hota hai. I should take it easy with Mount. You can absolutely say that. But at the end of the day, bhai, dekho, Mount for me is much more than that. Just like a Gallagher. बहुत similar reel के दोनों का. They can score you the goals. इसलिए बोला 4-3-3 is the best. और लोग बोलेंगे भाई आज Ankit, didn't you learn a lesson by going four at the back? You have been telling four at the back from God knows when. मैं बोलता हूँ. Yeah, you know what is happening. And again, people, I'll come to the chat and of course, Chelsea perspective, big up, bro. Very good to see you always. And of course, people do check him out. Always linked in the description below. You know what? Quickly, I'll say, ki, yes, it is a problem. Four at the back doesn't suit us right now based on the defensive personnel. वो अब मैं बोल सकता हूँ. लेकिन अगर आप देखिए, अगर कुलिबाली और त्यागो सिल्वा खेलते हैं along with maybe चिलवेल एंड रीस जेम्स, why can't we go that way? क्योंकि यार क्या होता है ना, 3 at the back में समझाता हूँ. If we go 3 at the back, what happens is one person covers for the other or he expects the other person to be covering him. Or we are so kind of comfort zone में आ गए हैं. 3 at the back is a formation. Man, that's how we play. And you know what? वो क्या करेगा? This is a quick fix for temporary term. हमें अगर लॉन्ग टर्म में करना है, इफ यू वांट टू क्रिएट मोर चांसेस, इफ यू वांट दोस रन्स टू बी मेड, भाई ट्रस्ट मी, यू आर पुटिंग अ बिट टू मच ओनस ऑन द फ्रंट थ्री. अगर हम खेल रहे 3 द बैक, वी डोंट हैव हजार्ड एनीमोर, वी डोंट हैव अ डिएगो कोस्टा एनीमोर. दोज आर प्लेयर्स जो ओनरशिप लेते थे. दिस लाइक ओके, कम ऑन मैन, ब्रिंग इट ऑन, आई एम देयर मैन, आई एम देयर, आई विल टेक ऑन पीपल. वी डोंट हैव सच पर्सनल अप फ्रंट, राइट? हमारे पास नहीं है. एंड एज इट इज वी आर कंसीडिंग. लेट्स बी ऑनेस्ट, 3 the back जाने के बाद भी हम कंसीड नहीं किए, डेफिनेटली किए. Yes, terrible one error, I wouldn't say that, but again, generally speaking also, 3 the back में last 6 महीनों में have we been the defensive unit that we were once under Thomas Tuchel? Have we been there? So why not give an excuse for best, like whatever be it, it'll take a few more days, but get into basically the next level with 4 at the back, because हमारे पास midfield personnel ज़्यादा 4 at the back की है apart from the single pivot. But anyway, Darren bhai, thank you for becoming a member again. Big up to you again. बहुत respect आपके लिए. Much love, fellow Chelsea fan. Tuchel said Koulibaly was the best player against Arsenal. Well, I have to say he was one of the best. Yes, 2 mistakes किया था Koulibaly ने भी, मैं इतना भी बोलूंगा. लेकिन the fact is him coming, just not the number 26, him coming एक confidence देता है backline को और एक leadership element लाता है. वो it was very clear. But yes, again, आप बोल सकते हो लास्ट गोल में where was he? It was Aspie's mistake मेरे लिए. Aspilicueta definitely got sucked in for whatever reason. He didn't trust Koulibaly for 1 second. I don't know why. That was a mistake, but again, not singling out that error, but I'm just generally saying. Do you think Kante's form dipped after the injury from last season? Well, definitely by Bipra. Kante wasn't good last season. Let's be honest. He wasn't good last season. Absolutely needs to pull up his socks. लेकिन होगा, डेफिनेटली होगा. इन माय ओपिनियन कांटे इज अ वर्ल्ड क्लास प्लेयर. क्लास इज परमानेंट. ही इज दैट वन ऑफ दोस प्लेयर्स, और ही इज नोवेयर क्लोज टू फिनिश मैन, एज इन ही हैज लॉट ऑफ इट. भाई एक प्रॉपर विंगर चाहिए, और वर्नर जिएक से कुछ नहीं होगा भाई. राहुल, व्हाइल आई 100% agree with you भाई, trust me that for me Hakim Ziyech can do it. हाँ, इट्स नॉट द राइट एटीट्यूड यार, जो हडसन ओडोई जो भी करता है. अगर मुझे सर्टन पोजीशन में खिलाओ, सर्टन फॉर्मेशन में खिलाओ, तभी मैं ज्यादा एप्लीकेशन करूंगा. दैट्स नॉट द राइट एटीट्यूड. वो एक देता है जियेश वाइब्स हमें, लेकिन लेट्स बी ऑनेस्ट, ही इज द मोस्ट क्रिएटिव प्लेयर इन द स्क्वाड. देयर इज नो टू वेज अबाउट इट. ही इज द मोस्ट क्रिएटिव प्लेयर इन द स्क्वाड. करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग. And then let me see, Werner was good. Klopp would have gone for him from day one. Yeah, again, the footballing mindset is missing. You can have a one-off great run, a one-off, great kind of finish, a great kind of, step over. वो कर सकता है Werner. I would not say he cannot do. लेकिन यार basic footballing sense और application अगर बंद हो गया ना उसका, then तो I don't think Werner deserves even 2 of 280k what he earns. Striker और creative midfield चाहिए. Chelsea game is predictable, makes chances from the wing. बीच में कुछ नहीं है. वेल एग्जैक्टली, बीच में बेसिकली साइडवेज पासिंग होती है, या तो डिस्ट्रॉइंग ऑफ द बॉल होता है. दैट्स व्हाट हैपेंस. सो दैट इज समथिंग दैट वी नीड टू गेट समथिंग एल्स. और इसलिए मैं बोलता हूँ ना, अगर 3 तरह जा ही रहो तो गो 3-5-2, गो फॉर प्रॉपर 3-5-2. और इफ यू आर ओपन फॉर अ चेंज, गो फॉर 4 at the back with 4-3-3, जहां पर you'll have 2 protective players next to Jorginho for now, and then that is in fact better.
But big up to Talk MU, bro. As in, respect this man a lot as well. Talk MU is a big Manchester United fan. Also, he owns a channel called Football vs. Cancer. It is always linked in the description below. Again, it's a fight against cancer via football. So let's please support that. And again, people, thank you for being here. Everyone who's here, I know you all love me a lot, and I do love you as well. But again, it's about basically right now just the reaction. And again, I would like to hear as much as possible from the neutrals. गैलेगर को अगर अच्छा से यूज करना तो बैक फोर करना ही होगा, 3 लेकर माउंट और गैलेगर. बिल्कुल भाई, बिल्कुल. Imagine Gallagher and Mount. Imagine even a Kovacic and Gallagher. Imagine a Kovacic and Mount. That is what it should be. Kovacic and Mount, or Kovacic and Gallagher and Mount, or maybe even Kante and Kovacic. These are your proper number 8s. Kante you would say is not a proper number 8, लेकिन यार he does the job very well apart from the finishing and passing. ठीक है, तो I think वो अच्छा breaker of play है. He needs to be there. So I think we have 4 proper options in number 8, और Ruben Loftus-Cheek is the 5th option. तो हमारे पास है. सिंगल पिवट नहीं है, फेयर इनफ मैन. यू यूज जॉर्जिनियो एंड गिलमोर, वही मैं बोलूंगा. और आप जाओ भाई, जब तक आप प्रॉब्लम क्या है. आई थिंक मार्कस अलोंसो डिफाइन करता है चेल्सी का प्रॉब्लम. मार्कस अलोंसो, पैब्लो एस्कोबार, बाय द वे एज पर न्यूज ही इज वेरी क्लोज टू बार्सिलोना, बिकॉज वो डिस्पाइट जो भी हो रहा है बिटवीन बार्सिलोना एंड चेल्सी, मार्कस अलोंसो का होने ही वाला है डिस्कशन विद बार्सिलोना. बट हैविंग सेड दैट, वो क्यों डिफाइन करता है चेल्सी का प्रॉब्लम. मार्कस अलोंसो, आप देखो, इफ यू हैव केयरफुली नोटिस मार्कस अलोंसो, राइट, जब 5 एट द बैक में होता है, व्हेन देयर इज नो वन टू काइंड ऑफ गिव हिम कंपटीशन, he defends like he doesn't know defending. ठीक है, but actually if you noticed Marcus Alonso 4 at the back kind of games, और जहां पर 5 at the back में he's getting competition from Chilwell, he comes on and he does well. He does better, much better. I will not say the world class level definitely, लेकिन defensively he does much better. आप carefully देखो, that is because when backs are against the wall, that is the Chelsea thing. When you are put under pressure, then you kind of perform. That is what is needed. ये unfortunately स्कूल के बच्चे जैसे है. अच्छा एक होता है भाई, एक एग्जाम में अच्छा स्कोर कर लिया, फिर चलो चिल मारते हैं, नेक्स्ट एग्जाम में प्रिपेयर नहीं करा. दैट इज व्हाट इट इज. सम इमेच्योर काइंड ऑफ किड्स डू दैट, एंड मेनी अदर चेल्सी प्लेयर्स आर लाइक दैट. तो वही है ना, अगर हम 5 एट द बैक में कंटिन्यू करते हैं, इफ यू गो 3 एट द बैक और 5 एट द बैक, you are basically kind of in that comfort zone waiting for the next player who's kind of in that defensive zone to kind of help you. What happened right now? Aspilicueta ने क्यों concede किया last goal? Think about it, people. मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ. तो 4 at the back में everyone will be more alert, everyone will need a proper responsibility, and they will in my opinion do a job eventually. वो होने वाला है, because come on, let's be real. हाँ, Malang Sarr maybe is not Chelsea level, as much as वो trier है, I would definitely be accepting that. But most of the other players on paper, they are Chelsea level. ऐसा नहीं है कि not Chelsea level. Even आप बोलोगे एमरसन नहीं है. एमरसन यार, Italian Euro winning team, he was there. So you cannot say that he's not good, right? So again, I know Mikhail, big up, bro. As in, I know we discussed a lot today, but again, there were not many people early in the morning. So let me come back and discuss what I thought. Plus, it's not just about today's match. It was also about भाई US tour में क्या हुआ है, what do we take out of preseason, and do we learn looking at other sides doing preseason. मतलब आप देखो, you talk about change. Chelsea का नया ओनरशिप है, इतने सारे प्रॉब्लम्स है, lot of changes, man. I understand totally. What about Manchester United? Yes, Manchester United कुछ किया नहीं अभी तक, तो मैं क्यों रिएक्ट करूँ, आप लोग बोल रहे हो भाई. Have you seen the preseason games of Manchester United? There is a certain aspect of more application. There is a certain aspect of free-flowing football. There is a certain aspect of basically being there for the ball. And that is what I think Timo Werner did not do today, for example. Again, maybe I'm singling him out, and that's what I've done the recent past. But again, this starts from him because he earns one of the highest. But anyway, let's get to likes ASAP. Exactly, man. Let's get to the likes, because ज़्यादा likes होते हैं, उससे ज़्यादा लोग आएंगे. That is basically खाना है YouTube के लिए, वो एक formula है. ठीक है, तो let's do that. Certainly appreciate all of you being here, absolutely. और हम और भी बात करने वाले हैं, absolutely. And yes, neutrals, given your views like मानव और बाकी लोग दे रहे हैं, absolutely. Tuchel prefers 3-4-2-1 since the formation has 2 number 10s. 3-5-2 can become more static, counter-attack based. He tried it versus City. Yeah, but again, he tried it versus Spurs. So you can say Spurs के साथ बहुत अच्छा हुआ, City के साथ बहुत ही खराब हुआ. You can say that absolutely, मानव, मैं agree करता हूँ. But मेरा वही point है ना, there has to be more flexibility. Like maybe the players are getting in real comfort zone.
That is not something that's good. That's good. Huh? I'm not saying change every week, but there has to be more flexibility. It's not like bhai aap 45 minutes karo, four at the back, and then nahi chal raha to back to three at the back, because that is our safety wall. But safety wall bhi, did it work? No, it didn't work whole of last season, did it? It did not work whole of last season. So why not change it? Why not change it? You have to change and give it some time. That's all my point. But anyway, I respect all your opinions. Big up to all of you. Gallagher is not a number 6. I don't kill a number 8. We already ruined Loftus Cheek. Please, Thomas Tuchel. Abhishek, you echo me, bro. You echo me. Trust me, you echo me. By literally, मैं वही बोल रहा हूँ. हाँ, he is a fantastic player to do a job. मैं बोल रहा हूँ आज के दिन में people will say I'm mad. भाई मैं बोल रहा हूँ गैलेगर को अगर सेंट्रल डिफेंस में डालेंगे ना, 3 द बैक सिस्टम, ही विल डू अ जॉब. वो करेगा भाई, वो करेगा. हाँ, आई एम नॉट कंपेयरिंग इट, बट द एग्जांपल देता हूँ. आई हैड सेड इट इन वन ऑफ द गोट स्ट्रीम्स रिसेंटली कि भाई स्टीवन जेरार्ड इज वन जो कहीं भी डालो वो करता है. दैट काइंड ऑफ प्लेयर, ही इज दैट इल्क ऑफ अ प्लेयर. नॉट द क्वालिटी इन दैट लेवल स्टिल, ऑब्वियसली nowhere close. He has to get there. He has potential. लेकिन द मेन चीज क्या है गैलेगर जो करता है, द मेन चीज क्या है जो जीएस करता है. That is something that you have to give them time. Just because we don't have that, that fast defender or fast DM, you are kind of killing the entire free flow of the team. And short fixes, man, these are all like, you can keep clean sheets kar sakte hai, lekin how many clean sheets have we kept in the last 4 months? Anyway, let's see. Aniket Borra, I think Tuchel should change the formation. 3 the back doesn't work for us in previous seasons as well. We should get in 4-3-3 and play free-flowing football. It might take time, but we can transform. Yes. And again, people, I'm not digging here, for Tuchel's grave. Definitely not. मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पर, ये प्रॉब्लम है कि यार ये एक मेंटालिटी ऑफ द क्लब हो गई है. देयर इज अ कंफर्ट जोन, प्लेयर्स आर इन कंफर्ट जोन, एक रिजिडिटी हो गई है. वहां पर थोड़ा सा चेंज होना मांगता है. एंड द बेस्ट एग्जांपल हमारे क्लब के अंदर है, 5 साल पहले कॉन्टे ने कर दिखाया था. तो लेट्स डू दैट. एंड बेसिक एप्लीकेशन इज मिसिंग. सो डेडवुड मैन, डेडवुड भाई, कौन कौन प्लेयर्स जाने चाहिए तो ये बता दीजिए सब लोग. मतलब इट इज अ लिस्ट ऑफ प्लेयर्स, इट्स नॉट इवन बेसिकली जस्ट अ फ्यू प्लेयर्स. Manchester United have definitely changed the formation and style, which is commendable, but Zidane, Iqbal and Charlie Savage are not just ready yet. Yes, they can be future superstars, but need time. Yes, agree there. Like करो algorithm, ये है YouTube का, बिल्कुल. Nikhil bhai, thank you as well. And yes, again Rahul as well, and Manav, thanks again, and Mikhail bro, big up to you again. 4-3-3 खेलना होगा भाई, then हमारे defense not capable. Well, आप उसको एक रन तो दो, क्यों बेसिकली फुदक रहे हो. बेसिकली एक थोड़ा गेम्स तो दो. इट इज प्री सीजन. अगर आप प्री सीजन में 45 मिनट्स में पैनिक हो रहे हो, तो आई थिंक व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्री सीजन. अगेन आई लव टुकल, मैं तो बोल रहा हूँ टुकल इज नॉट द प्रॉब्लम. बट जनरली एक मेंटालिटी ऑफ द क्लब इज द प्रॉब्लम. एक सेटल हो गए भाई, लोग सेटल हो गए. दिस इज बेसिकली द लास्ट चेक बिफोर द लास्ट बिग चेक. दैट्स हाउ इट इज. तो वो नहीं होना चाहिए बस. हाँ, देन यू से अगेन, मैं कॉमन सेक्शंस को काफी बोला हूँ रिसेंट स्ट्रीम्स में, लेकिन एक चीज मैं मानता हूँ उनकी बात कि यार भाई, इफ यू हैव मोर पीपल फ्रॉम द एकेडमी, एक फाइटिंग स्पिरिट ज्यादा मिलेगी आपको इवन इन प्री सीजन गेम्स. और एग्जाम्पल क्या था? एग्जाम्पल था आज का एल क्लासिको भाई. एल क्लासिको में आपने देखा बारसा के इतने प्लेयर्स वो देयर फॉर एग्जाम्पल, राइट, फ्रॉम द एकेडमी. राहो, दैट वाज एन एग्जाम्पल. मतलब दैट इज व्हाट हैपेंस. आप देखते हो, दैट इज समथिंग दैट इज क्लियर. आज भी बेसिकली दिख रहा था. बेसिकली मेसन माउंट वाज रेडी फॉर अ फाइट. हाँ, ही वाज नॉट गुड ऑन द बॉल, वो अलग चीज है. बट रीस जेम्स, ही गॉट इनटू अ फाइट. आई नो वो अननेसेसरी था, बट समटाइम्स यू नीड दैट एज वेल टू गेट दैट स्पिरिट गोइंग फॉर द टीम. तो वैसे हमें चाहिए और प्लेयर्स. तो इसलिए मैं बोलता हूँ, इफ यू आर एबल टू इंटीग्रेट से बिली गिलमोर समहाउ एंड अ लेवाई कॉलेज समहाउ, not for the sake of it, लेकिन अगर if they are up for the quality, first quality of course, and then we have such people. Hudson-Odoi is very very disappointing though. Hudson-Odoi को उस ब्रैकेट में नहीं डालूंगा. Him and Loftus-Cheek इतने एक्सप्रेसिव नहीं है. That's the main problem. Well, again, I agree man. मतलब क्या ही चीज का डिसअपॉइंट हो रहे हो, आपने क्या कर दिया है, उखाड़ दिया है भाई. वर्नर और Hudson-Odoi जैसे people, what have they done in the last couple of years? Please tell me. ठीक है, last year till mid season Chelsea was hot contender for Premier League. Well, we can still be if we basically put our minds right. हाँ, ट्रांसफर्स की बात कर सकते हैं, ट्रांसफर्स हम ला सकते हैं, डेफिनेटली लॉट ऑफ पीपल कैन कम इन, राइट. बट आई डोंट थिंक यार इट्स ऑल इन द ट्रांसफर मार्केट. सीजंस एंड मैचेस आर नॉट वन ऑन ट्रांसफर मार्केट अलोन. दे डेफिनेटली हेल्प, मैं नहीं डिनाई कर रहा हूँ वो, लेकिन आई थिंक
उस आड़ में हम जी रहे भाई. वी हैव टू स्टॉप मेकिंग एक्सक्यूजेस. यू हैव टू अप्लाई योर सेल्फ, यू नो, द सेकंड बॉल्स बी थ्रू बॉल्स. वही सेम बेसिकली पैटर्न बन गया थ्री द बैक में. यू नो, यार मैं बता सकता हूँ, आज मैं और मिकाइल देख रहे थे मैच सुबह, ठीक है. यू कैन एक्चुअली टेल कि नेक्स्ट पास कौन सा वाला होने वाला है. यू कैन एक्चुअली टेल दैट. And that is the whole point. Pre-season is all about experimenting and changing that. That is what I'm saying. Here, maybe we should do more. Anyway, we need a player like Rodrigo or Fabinho. Gallagher resembles Patrick Vieira a lot. Usko agar free role diya, he can do wonders a lot. Well, again, like I said, वो एक Mason Mount का ही basically, I think, replica है for me. He can do a lot just like Mason Mount can do. सिल्वा कोलिबाली होना होगा. या बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो बोलता हूँ करो. सिल्वा कोलिबाली करो और गो हाई ऑन बेसिकली पाउ टॉरेस. ही जो कवर, क्योंकि सिल्वा कोलिबाली कैन नॉट प्ले एवरी गेम. तो गो हाई ऑन पाउ टॉरेस, गो हाई ऑन स्क्रीनियर. अगर आप बेसिकली कुंडे के लिए तैयार हो 60 मिलियन पे करने के लिए, तो भाई 5 मिलियन देकर और स्क्रीनियर को लाओ ना. 5 मिलियन और मे बी कम देकर पाउ टॉरेस कराओ ना. एज इन दे आर नॉट बैड प्लेयर्स एनीवेयर. हाँ, स्क्रीनियर प्लेज वेल इन द थ्री द बैक सिस्टम, लेकिन नहीं फॉर नेशनल टीम ही प्लेज. भाई इफ एनीवन हैज एक्चुअली वॉच्ड Skriniar, if I'm not wrong, for Slovenia plays, right? They just missed in World Cup qualification. He had a fantastic World Cup qualification campaign in back four. He didn't have any star players next to him, did he? Or same thing you can say about Pau Torres. Pau Torres, भाई स्पेन के लिए खेलता है भाई in the back four. So I think that is very much needed. So there are people out there. It's just that हमारी scouting department, and again scouting department also they need to take the blame. So lot of factors, लेकिन again वो सब फैक्टर्स बहाने बन सकते हैं बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट दे आर प्रॉब्लम्स. इसलिए मैं बोलता हूँ बॉटम लाइन ये है कि प्लेयर शुड बी अप्लाइंग देमसेल्व्स टू द पिच मोर. वो बॉटम लाइन है. वर्नर्स आर बादशाही बाकली बाहर जाने चाहिए, अभिषेक बोल रहे हैं. इंटरेस्टिंग. Changing to 4-3-3 makes more effort than 3-4-2-1. Yes, players need to have more stamina to press and create overloads. बिल्कुल बिल्कुल 100% अग्री, 100% अग्री. लेकिन वही है ना, आप बेसिकली यू आर पुट इन, अगर आप बोलते हो ना यू आर कॉर्नर्ड, आप कॉर्नर किए जाते हो और यू आर पुट बैक अगेंस्ट द वॉल वाला सिचुएशन. मैं वही एग्जांपल दिया था ना अलोंजो का, कि आप देखो अलोंजो जब कंपटीशन नहीं है ना वो हकता है, लेकिन जब कंपटीशन है और फोर एट द बैक में खेलते हैं, यू सी anyone remembers game against, was it Liverpool, I don't know, one of the games जहां पर in between the game we changed the formation. Alonso had one of the best games last season, you know. तो आप देखो there are a lot of qualities to take from such kind of players. लेकिन again, are we in that comfort situation? Should we just have players put against the wall? हाँ, इतने सारे players है, इतना easy नहीं है to fit everyone at the same time. I totally agree. It's still pre-season, but then why panic and change the formation so quickly as well, जो आज किया. Chelsea transitions and attacks are too slow. Then defensive organization has been less than perfect and doesn't work unless executed 100%. Exactly. हम ट्राई करते हैं for that perfect goal, मिकाइल. हमें पता है नेक्स्ट पास कौन सा वाला आने वाला है. इट इज वेरी वेरी वेल ऑर्केस्ट्रेटेड और ऑपोजिशन आल्सो नोज इट. 4-3-3 में यू विल हैव मच मोर काइंड ऑफ यू सरप्राइज एलिमेंट. वहां पर यू कैन हैव वन ऑफ द नंबर 8 काइंड ऑफ ओवरलैपिंग द फॉरवर्ड, और यू कैन हैव वन ऑफ द फुल बैक्स काइंड ऑफ आल्सो ओवरलैपिंग द नंबर 8. तो काफी सारा चीज होता है. और sometimes even you can play 4-3-3 with a DM actually kind of advancing as a surprise with two people sitting back. तो काफी सारा चीज होता है भाई 4-3-3 में. और आपके पास एक सेफ्टी वाल्व है वहां भी, इट्स इन द माइंड. हाँ, विंग पे यू डोंट हैव सच अ सेफ्टी वाल्व, लेकिन आई थिंक मिडफील्ड में हमारे पास सेफ्टी वाल्व होगा उसमें. तो आई वुड स्टिल गो विद दैट. एंड यस ऑफ कोर्स रीस जेम्स भाई, मतलब आई सेड इट भाई. मैं मिकाइल और मैं देख रहे थे, मैं बोला यार वो अननेसेसरी था रीस जेम्स जो पुश किया था. आई रिमेंबर दैट मोमेंट. लेकिन दैट इज व्हाट वी नीड सच प्लेयर्स बिकॉज ऑफ दैट पैशन इज मिसिंग फॉर द बैज. हाँ, हम डेफिनेटली व्हेन इट कम्स टू कप गेम्स हम दिखाते हैं पैशन. आई विल नॉट डिनाई दैट. Come on, we just won the Champions League 15 महीने पहले, and we were in the couple of cup finals very recently, right? I understand, I agree there. What about the league? 5 साल से हम क्या कर रहे हैं भाई, क्या कर रहे हैं? वीक इन वीक आउट वाला मेंटालिटी क्यों नहीं आएगा? We need a winners mentality. We need winners in the squad. Rudiger was that, we have got rid of him. Rudiger was an annoying player who could easily break the opposition's moment and focus. Koulibaly is better technically, but he doesn't have that badass energy. Yeah, I would buy that as well, Manav. डेफिनेटली मैं लेता हूँ उसको. इसलिए मैं बोल रहा हूँ लाइक अ गैलेगर, अ माउंट, अ रीस जेम्स, दोस काइंड ऑफ प्लेयर्स मे बी कैन डू अ लिटिल बिट मोर. वो हाँ, when they have off games, the team has off games. That's what I'm trying to say. But brilliant comment that what's worse is the style of play we have is now seeming defunct. Yeah, बिल्कुल, मतलब सस्ट आउट यार. बिल्कुल सही बोला आपने, बिल्कुल सही बोला. वी आर सस्ट आउट. ठीक है,
मैं क्रिकेट मैच देख रहा हूँ अभी, जस्ट टू शेयर विद यू, क्रिकेट में देखते हैं भाई a certain kind of आपका googly bowler or basically that as in mystery bowler is certainly sussed out very easily, right? वही हुआ है. हमने एक्चुअली सरप्राइज किया था लॉट ऑफ टीम्स विद आवर डिफेंसिव कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर, लेकिन वो डिफेंसिव कॉम्पैक्टनेस कहां गई है? एनीवे चला गई. सो दैट्स द बेस्ट एक्सक्यूज फॉर अस टू चेंज. But anyway, I'm sticking to that formation wala cheez bahut lamba, but I'll come to the players because I don't think the formation is the problem. The players mentality, the commitment is the problem. How many players are there currently जो चाहते हैं बाहर निकलना लेकिन अभी स्क्वाड में? वो बता दीजिए everyone. Hello to 8744, of course, Barcelona fan house. Congratulations, AD. Of course, great win. I know it was just preseason, but great match as well. Maybe Tuchel is the problem, Lumani Bora. You know what? It can be. Who knows? It can be because body language kind of tells you a lot. But I would rather go with the manager because it cannot be a coincidence, Lumanu, because we are doing this from even before Tuchel. Even under Sari, it used to be the same thing. Even under Conte second season, it was the same thing. I think it is more a problem with the players' mentality. Week in week out वाली mentality नहीं है. They are like चलो एक बड़ा victory हो गया तो चलो chill मारते. That is what. Not I'm not saying they जानबूझ के करते हैं, लेकिन that is what happens subconsciously. So we need more mentality based players जो रूडिगर में था. Unfortunately, we have lost him. Management worst है, भोगेंद्र बोल रहे हैं, but again management has been changing for the last few months, so I don't think वहां पर हम ज्यादा blame करेंगे, to be very honest. But हाँ, let's 4-3-3 with a double pivot. Yeah, Jorginho Kante is a tempting option. Wouldn't be surprised if it's tried against Udinese, since Italian teams do struggle versus strong midfield. बहुत अच्छा option Manav. Yeah, I know Manav. Talking about Manav, like he is my FIFA coach as well. So well done on that, absolutely, bhai. And yes, we'll try and do FIFA as well, भाई 11 बजे से Almighty Sports Plus पे. Sterling cannot play a center forward, उसको wing पे खिलाना चाहिए. हमारा हाल देखो, he was not effective. Well, वही है, Havertz and Sterling are those players ना whom you would say that are they like typical wingers or they are like typical center forwards? Probably not. इसलिए मेरे ख्याल से वो फ्री रोल दे दो यार. You saw Gabriel Jesus आज के दिन में, just an example, आज का मैच ले रहा हूँ, he played that free role, so he was in that floating striker role. You can say they went 4-2-3-1 or he was a proper striker, but actually आपने notice किया तो he was kind of roaming everywhere. He was coming, he was dropping deep, he was roaming on the right hand side. A lot of times he was kind of running the left hand channel as well. तो भाई that is what हमें चाहिए. तो I think with Havertz and Sterling वही हो जाता है. तो दोनों ही बहुत ही similar players in the mentality. हाँ, very different in terms of the body shape and the ability, skills, लेकिन in terms of the mentality और basic mentality of forward play वो बहुत indifferent नहीं है. तो हो सकता है we may need one person who kind of sticks little bit, or then around him we need one more. So like Manav had a point, right? Someone like a second striker, for example, would probably work better. Yes, definitely likes कर दीजिए यार, सब लोग likes कर दीजिए, doesn't take a buck. और सब्सक्राइब करना भी मत भूलना for new people on the channel, of course, welcome, and of course much love to everyone here. And yes, we are live on also Almighty Sports Plus आज, so definitely check it out because people are waiting for my cricket stream. Like I said, this was planned earlier, so I would have done this earlier for cricket stream karta, but I was a little bit unwell, so I couldn't do it on time. But anyway, now that you guys are here and I'm feeling better, I'm kind of expressing my thoughts after especially watching the El Clasico. It gave me bad vibes as a Chelsea fan कि भाई ये देखिए भाई, that is called playing for the badge, be it pre-season or whatever. That is just playing as a footballer यार. Leave playing for the badge. आप जीतना चाहते हो हर मैच. That is what we need. It was a surprising result, Ankit, but I'm confident Tuchel will have it right for the start of the season, bro. I also am kind of optimistic talk, Emi bro, but you know that things cannot turn in a night. There are problems. We don't have a proper DM 4-3-3 system. Shreyank, definitely we don't have. भाई लेकिन क्या इटली ने नहीं यूज किया था एक proper DM when they won the Euros? I know आप बोलोगे it's just a tournament. They had a lot of other players which kind of covered Jorginho. भाई I'm just questioning that. Should we not try that for a longer period of time? हम panic नहीं करें. That is my only point. But again, I know that यहाँ पर the outcome is coming कि I'm criticizing Tuchel. That's not the only thing. Yes, that is part of it. लेकिन I think more the problem is the mentality. यार 4-3-3 में मैं बोलूँ, अगर प्लेयर सच में चाहते ना to protect each other and to kind of take responsibility, they can do a very good job. It's just that there are hardly any players भाई जो responsibility लेना चाहते हैं pitch पे. That's the main problem. These performances gave me headache. Hope we sign Kounde. Priyansh, bhai, move on, bro. Move on. Move on from Kounde, bhai. Kounde is not Virgil van Dijk. Much respect to Priyansh, bhai. You know it. In behind, very good channel as well. I highly recommend. Lekin, bhai, Priyansh, yeah, that is the problem.
we as a Chelsea fan base need to understand, or me, any fan base for that matter. भाई, there are मतलब सैकड़ों players है भाई. It is not about the skills all the time. At the very top level, it's about the application. It's about the management in the head. वो ज़्यादा important है मेरे लिए. That is the main problem first. I will blame Tuchel for the poor window. He didn't plan ahead and didn't have a proper scouting project for the season. His poor planning and scouting is the reason why Chelsea is losing players. Okay, तो दिव्यांशु बहुत अच्छा कमेंट है, बहुत ही अच्छा कमेंट है. लेकिन मैं इतना बोलूंगा इन टूकल्स डिफेंस यहाँ पर, हाँ टूकल को क्रिटिसाइज कर रहा था इतने फ्यू मिनट्स के, लेकिन टूकल्स डिफेंस में ये बोलूंगा, देखो हमारी ओनरशिप थी नहीं, तो उसमें टूकल का रोल वाज इट डिफाइंड? प्रोबेबली नॉट. हाँ, आप बोलोगे यार कोई आकर डिफाइन क्यों करेगा? If you feel that it's your club, you need to do it. But come on, let's be honest, it's a job at the end of the day. Also, he can do a certain amount of things by himself. और वो आया था चेल्सी में as a coach, ठीक है? In his interview, it was clear that he wasn't meant to be do other things. लेकिन उसने किया है बहुत सारा चीज. तो I think it was difficult for him to kind of lay down that. और अगर वो उसने बोला भी था यार ये लाओ ये लाओ ये लाओ, on the other hand, maybe at that point उस समय मरीना ग्रेनोस्किया थी और she kind of had it in her mind कि भाई मुझे जब बाहर जाना है, like a notice period. So that is why the planning kind of got postponed. It didn't happen until Todd Boehly came, which was too late. So I agree with your comment. लेकिन वही है, Tuchel blaming him, I'm not sure on that. Hello to Rocky, fellow Chelsea fan in the house. कैसे हो भाई? 4 to 5 players from Chelsea want to leave. Well, again, just kind of going player by player. And again, do not forget to like the stream, people, and again subscribe as well. And yes, we will be live in 1.5 hours on Almighty Sports Plus भी. लेकिन हाँ, देर वहां पर ज्यादा फीफा और हम ट्रांसफर्स की बात करेंगे, एंड ऑफ कोर्स वी कैन टॉक अबाउट द क्रिकेट मैचेस वेल. लेकिन हाँ, कमिंग बैक टू चेल्सी ना, आई टेल यू, एज इन जनरली मैं बोलता हूँ ना, आज फॉर एग्जांपल द पीपल स्टार्टेड से बोल देते हैं ना, चालोबा क्या ऑलरेडी मैं बोल दिया यार, क्यों ही इज नॉट अ स्टार्टर. यस, ही शुड बी गिवन चांसेस, एटलीस्ट एक एप्लीकेशन देता है, ही गिव्स मी गुड वाइब्स, एक टैकल के लिए जाता है. लेकिन वो ये एज अ डिफेंडर यू कैन नॉट अफोर्ड दैट स्विच ऑफ मोमेंट इवन फॉर 1 सेकंड. वो डिफेंडर और गोलकीपर का पहला रूल वो है वर्सेस समवन हु इज अ स्ट्राइकर. दैट्स द डिफरेंस. Pep knows how to deal with Tuchel lately. Klopp to win penalties. Yeah. Again, maybe आप penalties भी बोल सकते हो. वही मैं बोल रहा हूँ, weak mentality. Weak mentality is a part. I think that is the biggest point. Be penalties. आप बोलोगे यार penalties में अंकित, you cannot kind of blame them on penalties. Yes, I cannot. But time and again वो हो रहा है, मतलब they are not having that cutting edge. हाँ, आप blame नहीं कर सकते हो, लेकिन should we not scout better? Should we not get better? Or should we not play more maybe people from Cobham? Just saying. So Zada are playing for the badge, who are who are kind of up for the event. Just those kind of players. It's not easy to find them, of course, but I'm just saying. Shrey बोल रहे हैं 4 to 5 players wants to leave out, but no one wants to buy them. They are overpaid and overpriced. Fair point, absolutely fair point, भाई श्रेय. यहीं पर प्रॉब्लम आ जाती है चेल्सी की एज अ क्लब. तो क्या प्रॉब्लम आ जाती है? एग्जाम्पल है यहाँ पर बार्सिलोना. देखो, बार्सिलोना हैव been in a financial trouble, ठीक है, लेकिन if you see Barcelona with Sevilla, Barcelona with other clubs as well, उनकी रिलेशंस काफी अच्छी है. चेल्सी की थी श्रेय, यहाँ पर चेल्सी के पास 2-3 क्लब्स होते थे जहां पर वी यूज्ड टू हैव अ लॉट ऑफ ट्रांसफर्स टू एंड फ्रो बैक इन द डे, ठीक है. हमारे पास आज के दिन में be it even like the top clubs, even the Vitesse, we don't have many people going there. I know it doesn't help players, लेकिन you can always send them on loan. You can always, आप बोलोगे यार लोन पे you will not get all the money back. Obviously, you've paid a lot of money. लेकिन at least if they are sharing like 50% of the salary, why not? तो वही है, डेडवुड को हटाओ. और डेडवुड मतलब players who come with weak mentality. Yes, they might be basically very good players on the day, but they come with weak mentality. हमें चाहिए week in week out वाले players. We cannot have, I know मैंने बोला ये maybe Cobham people who are जो out of Cobham है, जो Chelsea trained people है, वो लोग ज्यादा passion के साथ खेलेंगे. लेकिन again, for that matter, you cannot have Ampadu playing all the time. You know what I'm saying? So he cannot be a third choice central midfielder. I'm just putting a point. तो you need to have a very fine balance. तो वहां कैसे होगा? पहले आप फिल्टर आउट करो कि भाई ये है 6 प्लेयर्स हमें रीड करने हैं, तो ये 6 प्लेयर्स कहां जा सकते हैं, ये ऑप्शंस है. तो यहां पर लोन जाएगा तो बात करिए. तो हाँ, इफ दे नॉट टेकिंग ऑन लोन, देन बेसिकली गो टू अनदर क्लब और पुट देम ऑन ट्रांसफर विंडो. और भाई एट द एंड ऑफ द टूकल का भी जॉब ये है, ही इज अ कोच. इट इज प्री सीजन, इसलिए मैं बोल रहा हूँ ना, प्लेइंग देम एंड नॉट चेंजिंग देम फॉर अ व्हाइल इज आल्सो मेकिंग सेंस. क्योंकि यार आपको देना पड़ेगा ज्यादा टाइम ऑन द पिच और आपको सिखाना पड़ेगा एज अ कोच. दैट इज फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली योर जॉब, ठीक है. नॉट जस्ट टूकल, इज एंटायर मैनेजमेंट, आई वुड से, नॉट हिम. तो
part of it, I would say, definitely start from players' mentality. But then at the end of the day, why are we depending so much on transfers? Why are we depending upon blaming the deadwood? Are the deadwood motivated enough? If they're not, why? Yes, mentality is an issue. Lekin isn't that part of Tuchel and the management's job? So there has to be more ambition. अगेन प्री सीजन है, पहले 2 गेम्स में प्रेशर नहीं डालोगे. आज जो बोलेगा टूकल बहुत बहुत टेलिंग थी चीज थी. फाइनली इट्स सेइंग दैट ओके वी नीड टू पुल अप अवर सॉक्स. एट दिस रेट हम नहीं compete करने वाले. इवन विद आर्सेनल वर नॉट इन द चैंपियंस लीग. क्लियरली बोला है टूकल ने. टूकल ने बोला है. जस्ट नॉट अबाउट दिस इज अबाउट द लास्ट गेम एज वेल. भाई जो यूएस टूर हुआ है ना, जनरली आई थिंक वी डिजर्व टू लूज, व्हिच इज फेयर इनफ, बिकॉज वी जस्ट weren't गुड इनफ. दैट इज द बॉटम लाइन. वी वर टोटली अनकम्पिटिटिव. कंपटीशन देना है हमें, फाइट करना है एवरी बॉल. दैट्स व्हाट ही मेंट. What is worrying is the level of commitment physically and mentally, because this game was not the same. It was much higher for Arsenal than us. Arsenal were much more motivated for the game. That was the problem. We can say that they have played with, I think, their strongest formation, that is Arsenal. They have now been together for several weeks and more than a year. They have reinforced their formation, played the same structure, and that is the line. They will try to start Premier League games. हमारा बेसिकली बैक लाइन हो गया, मिडफील्ड हो गया, फॉरवर्ड लाइन अभी तक सिक्योर ही नहीं हुआ है. हाँ, वहां पर टुकल हिमसेल्फ इज आल्सो टू ब्लेम, बट इवन द प्लेयर्स नीड टू स्टेक अ क्लेम भाई कि मैं डेफिनेटली फर्स्ट 11 में होऊंगा. व्हाई आर दे प्लेइंग फॉर द बैज? व्हाई आर दे प्लेइंग फॉर द प्लेस? वो है मेरा क्वेश्चन. I guess we know everyone's job better than them. Exactly. Easier to say to be on the other side. Shrey, 100%. I hear you, bro. Again, I don't want to play the blame game यहाँ पर. लेकिन also we have to find solutions. Solutions क्या है? जैसे मैंने बोला कि you have to list out first the players who need to go out. ठीक है, फिर ही प्लेयर्स आएंगे, मेरे ख्याल से मोटिवेटेड होंगे. हो सकता है प्लेयर्स भाई सेकंड ऑप्शन रख रहे चेल्सी को, क्योंकि उन्हें पता है कि बाई चांस उन्होंने परफॉर्म नहीं किया तो दे विल गो आउट ऑन नोन, और दे ऑलरेडी हैव अ बिग स्क्वाड. तो अगर इफ यू आर हैविंग अ स्मॉलर स्क्वाड, हो सकता है दैट मोर प्लेयर्स विल गेट मोटिवेटेड टू कम, और टुकल कैन कन्विंस देम टू प्ले इन द फर्स्ट टीम. ज्यादा वो हो सकता है. देखो, इट्स इजी फॉर मी टू से दैट गेट रिड ऑफ सर्टेन प्लेयर्स, लेकिन अगेन जस्ट कमिंग बैक टू द प्लेयर्स. आज सांगी बोले देखो भैया, द थिंग इज अभी नया है हम मार्केट में, तो लोन सेल बाई में इतना प्रॉब्लम हो रहा है. मरीना होती तो डिलिक्ट, कुंडे, रफीनिया से 2 प्लेयर्स हमें जरूर मिलते हैं. वेल, आई अग्री विद दैट साग्निक. लेकिन वही है ना, हमारे पास बैकअप ऑप्शंस था क्या? नहीं था. एंड ऑफ कोर्स बिग अप टू मुदित एज वेल, थैंक्स फॉर जॉइनिंग ब्रो. लेकिन हाँ, सब लोग लाइक कर दीजिए, लाइक करना मत भूलना, और इन केस यू आर सब्सक्राइब, लेट्स सब्सक्राइब एज वेल. बट दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, लाइक यू नो, देखो, ट्रांसफर मार्केट इज वन थिंग, प्लेयर मेंटालिटी इज दूसरा चीज. ठीक है, प्लेयर मेंटालिटी कम्स डाउन टू द प्लेयर एंड द कोच. इट्स अ बिट ऑफ अ बोथ. तो आप दोनों को ब्लेम करोगे, और वहां कैसे फिक्स हो सकता है कि यार आपको उसको बोलना पड़ेगा भाई, आप अगर परफॉर्म नहीं करोगे तो आप जाने वाले हो. अनफॉर्चुनेटली वी हैव टू डू दैट. इन एन आइडियल सिनेरियो आप कोई भी वर्क एनवायरनमेंट में वो नहीं करना चाहते हो, एब्सोल्युटली. बट द मोटिवेशन फॉर वीक इन वीक आउट फुटबॉल इज समथिंग दैट इज मिसिंग. दैट इज द मेन प्रॉब्लम. चेल्सी का हमेशा से रहा है, पहली बार नहीं है. लास्ट डेकेड में देखो, एक साल बढ़िया करती, एक साल अच्छा नहीं करती, एक साल बढ़िया करती, एक साल अच्छा नहीं करती. दैट इज अ क्लियर केस ऑफ मेंटालिटी इश्यू. वो इजी है बोलना मेरे लिए, सिटिंग हियर एंड जस्ट टॉकिंग टू यू ऑल भाई, लेकिन दैट इज द रियलिटी. नमस्ते विशेष, डेफिनेटली आपको भी मच लव भाई. गुड प्लेयर्स हु वांट टू कम टू चेल्सी, टारगेट देम. डेक्लन राइस, बिसुमा, या दैट्स अ गुड, वेरी गुड पॉइंट. प्लेयर्स जो आना चाहते हैं चेल्सी के लिए, प्लेयर्स जो खेलना चाहते हैं चेल्सी के लिए, दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट. हाँ, अगेन इट्स इजी फॉर एनीवन टू वॉइस दैट, और ही कैन मेक अ मूव लाइक लुकाकू ने किया था. बट अगेन वो एक्सेप्शंस होते हैं. एट द एंड ऑफ द डे दीज आर आल्सो प्रोफेशनल्स, so they have to be thorough professionals and we have to take it as it comes, right? But we have to play them if they are wanting to play for Chelsea first. That is the bottom line. And then अगर बाकी लोग नहीं खेलना चाहते तो we have to understand कि क्यों नहीं खेलना चाहते. Again, coming back to the players जो मैं था, तो भाई you have a Thiago Silva in defense playing. ठीक है, अगर आप बोल रहे हो आज के दिन में, अगर एक डिफेंडर 100% कमिटमेंट नहीं कर रहा पिच में, when he is playing next to Thiago Silva, Aspilicueta, Aspilicueta himself is questionable थोड़ा आज के दिन में तो, लेकिन हाँ, Thiago Silva, Aspilicueta, these are two legends of the sport. These are two legends of sport generally. आप उनके नेक्स्ट आपको खेलने का मौका मिल रहा है, you know, and you're not giving 100%. That is an issue for me. That is an issue. When you're talking about Gallagher, of course, no, I have no issues with him. हाँ, प्रॉब्लम वहां पर टूकल की जो हम बात करें in terms of formation. But what about the players who came from the bench? Did they give an impact?
वहां पर मिची बैचुआई, आप बोलोगे यार कॉन्फिडेंस नहीं है, कम ऑन, आप मिची बैचुआई को कैसे बोल सकते हो यार भाई, उसको भी पैसे मिल रहे हैं, उसको भी बेसिकली हमने कितना दिया था भाई, 35 मिलियन में साइन किया था, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग पीपल. मिची बैचुआई वाज साइंड इन ऑन 35 मिलियन और समथिंग, एंड दैट वाज व्हाट, 5 साल पहले, ऑलमोस्ट 5 साल पहले. तो आई थिंक इतना एप्लीकेशन क्या दिख रहा है आपको, मतलब इज इट नॉट एन अपॉर्चुनिटी, उसको दिख नहीं रहा है कि चेल्सी का फॉरवर्ड लाइन इज मिसिंग, इट्स अ ब्रिलियंट अपॉर्चुनिटी फॉर मी टू प्रूव. अरमांडा ब्रोहा की कैंप क्यों बोल रही है बार बार कि यार वी वांट फर्स्ट टीम फुटबॉल, वी वांट टू प्ले इन डिफरेंट फॉर्मेशन, वी वांट टू गो एल्सवेयर, वो सब क्यों बोल रही है व्हेन यू नो दैट चेल्सी की फॉरवर्ड लाइन इज नॉट आइडियल, तो डोंट यू वांट टू सिट एंड फाइट. मतलब दैट इज द होल सैडनेस अबाउट इट. इतना पाडू बहुत सा प्लेयर इन मोमेंट्स, बट अगेन ही इज अ प्लेयर अनफॉर्चुनेटली जैसे लाइक चालोबा, जिनमें मिस्टेक्स है. हाँ, बीइंग सो यंग यू वुड से दैट डेफिनेटली मिस्टेक्स, यू विल एक्सपेक्ट, मैं एक्सपेक्ट करता हूं. बट रियली स्पीकिंग, यू नो व्हाट, एज अ डिफेंडर, एज अ डिफेंसिव मिडफील्डर, वही है द लीस्ट अमाउंट ऑफ अनफोर्स्ड एरर्स आप में है ना, यू आर द बेटर प्लेयर. अगर आप एक मैच में दिखे ही नहीं, मतलब पता ही नहीं चला कहां है आप मैच में, if you're a defender or a defensive midfielder, in my opinion, is better. Claude Makelele, people, I watched every minute of Claude Makelele in Chelsea. मैं बोल रहा हूँ आप लोग को, Claude Makelele जब वो खेलता था ना चेल्सी के लिए, he wasn't celebrated as much. He was started to celebrate only after he left Chelsea. क्योंकि people started realizing what we were missing after Claude Makelele. John Obi Mikel, he's one more guy. You know, those are people that we need to look up to. Well, that is the application. You have to be there for the team in every moment, be it preseason, be it a practice match, whatever. भाई रूडिगर लड़ लेता था, रूडिगर का इतना सारा स्टोरीज थे, इफ यू रिमेंबर दैट ही यूज्ड टू हैव फाइट्स ऑन द ट्रेनिंग पिच, दैट यूज्ड टू हैपन. Why? Because that is the player he is, that is the sports personality he is. He's a winner. uh, okay, what these Marina fan club members even talking about? We never sell our players when there's a decent offer. Michi to Dortmund, Cho to Bayern, Werner to Bayern. We have some obsession with loans. Yeah, but again, you can argue on certain loans and certain sales कर सकते हो अभिषेक, लेकिन वो टाइमिंग भी इंपॉर्टेंट. लाइक आई नो काफी लोग निंदा किए थे चेल्सी को टू सेल टोमोरी, बट इफ यू एक्चुअली रिमेंबर अभिषेक, एट दैट पॉइंट इन टाइम पीक कोविड था, उस समय एक ऑफर आना भी बहुत मुश्किल था, और ऑफर जो आया था आई थिंक वेस्ट हैम से आया था, वो वेस्ट हैम के लिए मना कर दिए थे. ही वुड हैव गॉन टू वेस्ट हैम विद अ बाय बैक, वो पहला ऑफर था, लेकिन क्योंकि उन्होंने मना कर दिया था टोमोरी को, देन वी हैड टू एक्सेप्ट मिलान, और मिलान वाजंट agreeing at that point to kind of put that clause from what I understand, because again आप सोचते हो based on the transfer, but again lot of things happen there, right? So that's the idea. कुंडे टू बारसा, भाई क्या आया है क्या कुछ? हाँ, तो यहाँ 2 घंटे पहले एक ट्वीट आया था, और भी कुछ आएगा. कुंडे बारसा प्रिपेयरिंग ओपनिंग बिड, won't match 55 million as structure will be different. No Depay or Dest included. Chelsea's 55 million bid still valid in Sevilla's hand. So basically, Barca अभी भी work कर रही है on the contract. That's what I understand from Fabricio अभी. But हाँ, Sevilla also say that they are only talking to Chelsea right now, but वो सच नहीं है, वो हम सब जानते हैं. We need proven goal scorer like CR7, but Gaffer wants to build a team around Sterling. Well, Akash, भाई much love to you as well, definitely. लेकिन मैं इतना बोलता हूँ, CR7 आकर भी है ना टीम बढ़िया नहीं बनेगी. क्यों? क्योंकि यार वी डोंट क्रिएट इनफ एज वेल, वी डोंट पुट इन इनफ क्रॉसेस. रीस जेम्स पुट अ कपल ऑफ क्रॉसेस, आज मी एंड मैकेलो डिस्कसिंग, भाई फाइनली पुट इन क्रॉसेस अर्ली, वो चाहिए हमें, लेकिन कोई स्ट्राइकर में है नहीं, तो वहां पर क्रिस्टियानो रोनाल्डो विल हेल्प, लेकिन ओवरऑल आर वी क्रिएटिंग इनफ एज वेल? तो आई थिंक इट्स अ बिट ऑफ बोथ, तो दोनों ही चाहिए भाई आकाश. लेकिन हाँ, द ओनली पॉजिटिव इज टूकल सेड वी नीड एटलीस्ट वन सेंटर बैक. नाउ आई इवन एक्सपेक्ट अ विंग बैक सब इन अ फॉरवर्ड. वेल, आफ्टर टुडेज परफॉर्मेंस आई डोंट नो भाई, एस्पिलिक्वेटा भी आई हैव क्वेश्चन मार्क्स, लेकिन बिकॉज उन्होंने बोला है क्लियरली दैट जस्ट गोइंग ऑन टू टुकल स्टेटमेंट भाई, जस्ट टू लेट यू ऑल नो, उन्होंने कहा है देखो, I think we've been sanctioned and players have left us. We know some players are trying to leave us, and that's where it's at. We've had an urgent call for quality players and a huge amount of players from quality. We have two quality players. There's no doubt about it. That's obviously Sterling or Koulibaly, but we are not competitive like that. And unfortunately, we could see that today. So that is what he's saying. Like again, until the players leave, we cannot get players here. ठीक है, और अगर players है, why are they wanting to leave? That's a big question, right? Aspi is not at the level which he used to be, but I never doubt his commitment. My captain gives yes. बिल्कुल भाई, मतलब आज मिस्टेक थी, मैं लेकिन कमिटमेंट का मैं नहीं बोल सकता, तो आई वुड अग्री विद दैट एब्सोल्युटली. यस डेफिनेटली देखता हूँ भाई पीयूष भाई, मैंने शायद नोटिफिकेशन देखा था, बट मुझे टाइम नहीं मिला भी देखने के लिए. लाइक आई सेड, आई वाज काइंड ऑफ अनवेल दिस इवनिंग, so I didn't check many messages, but again I'll get back to that. And again, big respect to everyone, especially Predator XHD. Please do check out his channel as well, people.
भैया टुकल ने बोला आज कि वी हैव द सेम इश्यूज बिकॉज वी हैव द सेम प्लेयर्स. अगर कोच, या बिल्कुल वही मैंने रीड किया अभी. लेट्स सी मैन, मतलब समथिंग्स गॉट टू गिव. Watch Chelsea versus Arsenal. I felt there was no rhythm in the Chelsea gameplay. I feel you need a good striker and centre back. अंकित भाई, हमें चाहिए एक सेंटर बैक, एक मिडफील्डर और एक स्ट्राइकर. आइडियली मैं बोलता हूँ, सच में बोलूँ, एक चाहिए सिंगल पिवट का बंदा, क्योंकि यार वो अगर आ जाए ना तो बहाना मिल जाएगा एटलीस्ट फॉर अस टू गो 4-3-3 इन माय ओपिनियन. एक चाहिए ऑब्वियसली डिफेंडर, क्योंकि भाई कुलिबाली एंड सिल्वा कैन नॉट प्ले एवरी गेम. एंड ऑफ कोर्स वी नीड अ स्ट्राइकर हु कैन फिनिश. नो टू वेज अबाउट इट, नो टू वेज अबाउट इट. होपफुली ब्रोहा will get up to that, लेकिन again वो अभी के लिए unproven है really. I watched John Obi Mikel at his later stages from 2010, never liked him but maybe he used to be as good as no. So John Obi Mikel, मैं वापस अभिषेक, बहुत ही बढ़िया पॉइंट है, क्योंकि यार मैं शेयर करता हूँ आपसे, रिलेट करता हूँ. मैं उस दिन मैं गोट 11 कर रहा था, सब लोग देखे थे. आई डिड अ गोट 11 बेसिकली. आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ऑलमाइटी स्पोर्ट्स प्लस, दैट वाज नॉन चेल्सी प्लेयर्स. उसमें मैंने एक चीज मेंशन किया था कि रिसेंटली वन ऑफ द वॉच अलोंग विद फतेह मैंने एक चेल्सी 11 किया था. आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर कौन सा वॉच अलोंग था. आई विल ट्राई एंड क्लिप दैट एंड पुट दैट एज डिफरेंट वीडियो. मेरा ऑल टाइम चेल्सी 11. एंड ट्रस्ट मी पीपल, आई डिड नॉट हैव मैकेलेली. हाँ, आई वैल्यू हिम बिग टाइम. लेकिन even John Obi Mikel, obviously I didn't have. I'm not saying you he's better than McAlee. I'm not saying that, people. Definitely not. But both were immense. Both were immense. The reason I don't have is because I didn't have a liking for them. Put it that way, like Abhishek has said, क्योंकि they did more of the dirty work. They did मतलब वो एक जो free flowing football होता था. They used to break up play, fouls करते थे काफी. Those kind of players. But वही है ना, at some point to protect that defensive line of back four, you need that. बैक फोर में वैसा प्लेयर चाहिए. तो दैट्स व्हाट आई वेंट. बट एनीवे, वी नीड कंसिस्टेंट परफॉर्मिंग प्लेयर्स. वी हैव अ न्यू हीरो एंड न्यू विलन एवरी गेम. या डेफिनेटली भाई, जर्सी कलेक्शन होपफुली अपना नया और बढ़ेगा इन कमिंग डेज अगेन विद ऑल योर सपोर्ट एज वेल. मे बी अर्ली सेटबैक फॉर चेल्सी वाज रिक्वायर्ड. या लेकिन भाई फुटबॉल पिक्स, क्या ये सेटबैक हमें लास्ट सीजन नहीं मिला था अगेंस्ट आर्सेनल? 4-2 हमने हारा था, रिमेंबर? वाज इट नॉट इनफ? How many changes have we made after that? Hardly any. आप बोलोगे दो नए प्लेयर्स आए और दो प्लेयर्स from loan have come back. So is it enough? I don't think so. So I think it's a player's mentality. So not many changes to give that excuse, in my opinion. Memphis Depay for Aspi and Alonso. Well, Alonso तो जाने वाले, as much as I don't think जाना चाहिए, because Emerson really, अगर हम back 5 continue करते रहे तो Emerson is not your ideal wing back. ये बैक फोर में इज नॉट टू बैड एज अ बैकअप भाई, लेकिन चिलवेल इज कमिंग बैक आफ्टर लॉन्ग टर्म इंजरी. हमें चाहिए नॉट बैकअप्स, वी नीड पीपल हु आर कंपीटिंग फॉर द फर्स्ट टीम स्पॉट. ज्यादा फाइट चाहिए भाई, और अनफॉर्चुनेटली हमें नहीं है. तो आई कैन गेट रिड ऑफ अलोंसो टू सम एक्सटेंट, लेकिन एसपी, क्योंकि हमारे पास फर्स्ट टीम में भी इनफ प्लेयर सेंटर बैक्स नहीं है, आई वुड कीप हिम राइट नाउ बिकॉज हम थ्री द बैक खेलते हैं. Memphis Depay, again, I would not mind getting him, सच में बोलता हूं तो. लेकिन again, is he that finisher? Not really, not really. That's just the Dutch fan in me saying, to be very honest. Hello to Jota20, thank you for coming on, and do not forget to like the stream and of course subscribe as well. And remember, we are live 11:15 baje maximum. We'll start on Almighty Sports Plus. We'll start the FIFA stream with transfer talk as well as react to the cricket game. I think you're a very good creator. Techno Krish, big up भाई, thank you भैया. आर्सेनल की फुटबॉल देखने में एंटरटेनिंग लगता है, ऐसा लगता है उन्हें कोई चेल्सी. वेल अगेन भाई रॉकी, मैं इतना रिएक्टिव तो नहीं होना चाहता. आर्सेनल एट द एंड ऑफ द डे. लेट्स बी रियल, ऑल द आर्सेनल फैंस, ऑल द रिस्पेक्ट, लेकिन भाई यू वुड एग्री एज वेल. तो आई वुडंट कॉल दैट मच, बट दे हैव डेफिनेटली इंप्रूव्ड. और वही है, मतलब दे आर हैविंग अ फिलॉसफी एंड दे आर काइंड ऑफ बीइंग ऑप्टिमिस्टिक डिस्पाइट मेकिंग मिस्टेक्स. वो उससे कंटिन्यू कर रहे हैं. वही चाहिए भाई चेल्सी को. 45 मिनट्स आप दे रहे हो और फिर आप चेंज कर रहे हो. आई अंडरस्टैंड जब आप लीग में होते हो, बट प्री सीजन में भी कर रहे हो, दैट इज अ बिट टू मच. या बिल्कुल भाई आदर्श, वो तो क्लियर है. इट्स जस्ट द एनवायरनमेंट ऑन द पिच, द एटमॉस्फेयर ऑन द पिच, आई वुड से वो एक नहीं बन रहा यार. मेसन माउंट कैन हेल्प, रीस जेम्स ही ट्राइड टू हेल्प टुडे डेफिनेटली, लेकिन we need more players like that. We need more players like that. Arsenal fan here, Darren Bent once scored 8 goals in pre-season, then went half season without scoring. We should, yeah. No, but Golazo edit, first of all, big up to you. Again, I have to defend myself here. This reaction, yeah, you might feel it is a reaction because of the timing जब मैं कर रहा हूँ stream, but this is not based on this game. This is built on the entire pre-season mentality. एक होता है ना application. They don't have application on the pitch. Are they fighting for it enough? That Werner example in the beginning of the stream, if you missed, please check it out. मैंने जो दिया था, Malang Sar and Werner had a quarrel. वहां पर आप देखिए, वहां पर वर्नर की गलती थी क्लियरली.
clearly, or our player power is saying, because Tuchel ने बोला Balang sir को finger on your lips. So there is a problem with Tuchel as well. So there is some problem there. So इसलिए there is more to it. It is more is happening in Chelsea Football Club for the entire last season as well. So that's something that we have to fix. Um, Okay, no Drogba, no win against Arsenal. Well, you can say that, or no Tammy. What do you say? I guess we need the ball recovering Kante so that James and Chile have freedom to go forward. Today we saw 3 goals from right hand side. Ball is point. Or maybe Shrey, that is maybe our Shrey has hit the nail on the head. देखो हम थ्री द बैक में बोलते हैं, मैं बोल रहा था वेरी वेरी कंफर्टेबल एंड ऑल दैट, और मे बी आप बोलोगे द प्लेयर्स आर सो ओवर डिपेंडेंट ऑन सर्टन प्लेयर्स. उनको पता है कि कांटे मेसन माउंट विल वर्क देयर एस ऑफ नो मैटर व्हाट. और आर द अदर प्लेयर्स, और एस्पिलिक्वेटा आल्सो मैं उस ब्रैकेट में डालूंगा. What about the other players? What about the other players? That is where basically it gives a clear message to the younger players who are coming. तो इसलिए मैं बोलता हूँ ना that over dependency to players, personal पर dependent मत हो. You have to have a footballing philosophy in the mind. तो वो एक motivation level is part of Tuchel's job, is part of the players' job themselves to look into the mirror and then figure out कि what they want from themselves. Yeah, it's easy for me to say, भाई मैं तो यहाँ कर आप बोल रहे हो सिर्फ रिकॉर्ड कर रहा हो या बोल रहा हो लाइव, it's easy for to get a mic and of course get internet and say, but let's be honest, यहाँ पर मैं इतने साल तक देखा हूँ चेल्सी को, तो I'm just seeing the player mentality difference. यहाँ पर there's a clear mentality difference which needs to change somehow. How about Kostic as competition? He would have been brilliant. He would have been brilliant. एक attacking wing back है, लेकिन वही है with Kostic going back to the same point football creates that he is more like a wing back. He's not a left back. So we cannot be rigid. We need to sign players जो they are not meant to be players in certain formations. Ziyech का वही हो रहा है ना. We are not able to utilize Ziyech. मैं ऐसे नहीं बोल रहा Ziyech को बेच दो. I would say नहीं, because I want 4-4-3-3. मुझे लगता है इन द फ्यूचर इफ यू आर गेटिंग प्लेयर्स, डोंट गेट देम ओनली टू प्ले इन सर्टेन फॉर्मेशंस. We need player mentality to be the highest kind of a need. ठीक है. Attacking options apart from Ronaldo, well, at this point in time bleak है भाई आतन, bleak. It's a bleak market. We don't have many attacking options. आज कुछ लिंक्स हुए वापस से एंटनी और रफाइल लिया ऊपर, दैट लिंक्स हुए, बट अगेन क्या वो प्लेयर मेंटालिटी लाते हैं वीक इन वीक आउट वाला इन एट द वेरी वेरी टॉप लेवल? नहीं, नहीं. आप बोलोगे यार वी नीड टू स्काउट बेटर, व्हाई नॉट इन्वेस्ट, लेकिन आप यंग प्लेयर पर, अनप्रूवन प्लेयर्स एट द वेरी वेरी टॉप लेवल तब इन्वेस्ट करोगे when basically they are at low cost. Rafael, Leao and Anthony are going to cost you, north of 75, 80, 90 million. That's a reality. Next season 3 the back ही लग रहा है भैया, लेकिन वही है, मतलब again I don't mind that. Don't get me wrong people, I don't mind 3 the back, but I need better application on the pitch. That's what I'm saying. But again, just coming back to the the bench, right? For example, you know what, Callum Hudson-Odoi यार, Callum Hudson-Odoi should be looking into the mirror. वो देखना चाहिए यार उसे, लाइक वो क्या कर रहा है भाई, क्या कर रहा है अपने करियर के साथ, वो क्या रहा है वो. हाँ, चांसेस नहीं मिले, ही हैज बीन मैनेज्ड बैडली, आई टोटली अंडरस्टैंड, ही इज नॉट अ विंग बैक एंड ऑल दैट, मैं अंडरस्टैंड करता हूँ, लेकिन भाई फॉर वॉट एवर मिनट्स यू आर, मतलब बैक इन द डे मुझे याद है, मतलब अगेन मैंने ये स्टोरी पहले भी शेयर किया है कि आई नो हैसेलबैंक में कंपेयर करो विद कैलम हसन-ओडोय, I'm not really comparing, but I'm just putting in the same sentence. Hasselbank was kicked out of the team by Ranieri, or he made sure he came back by virtue of those substitute minutes. उसको मिलते थे substitute minutes, और he was a super impact sub. और भाई finally Ranieri is like, ठीक है भाई वापस लाते इसको टीम में. That is what Christian Pulisic, he is an example of such a player. जो as a substitute he does well, but he doesn't do well enough as a starter. हाँ, he needs to improve big time. लेकिन यार आपको फाइट दिखानी पड़ेगी, आपको दिखाना पड़ेगा दैट यू आर trusting yourself first. Is it the confidence level only? That's the main problem in my opinion. But anyway, people, Chelsea fans and non-Chelsea fans, what do you think? Like again, I want like a set of people you think should be go out of Chelsea Football Club at this point in time, and you have a replacement. If yes, let me know. भैया अब लगता है Chelsea should sell Werner, can't finish, can't dribble pass. मैं तो बोलते आ रहा हूँ भाई रॉकी, मतलब इफ यू हर्ड द चैनल, आप तो सुनते आ रहे हो, लाइक वर्नर इज ही, मैंने उसको फ्रॉड तक बुलाया भाई एट टाइम्स, बिकॉज फुटबॉलिंग माइंडसेट में ही इज फूल्ड अस दैट ही इज अ फुटबॉलर. ही इज बेसिकली एक, ही इज एथलेटिक्स का स्पोर्ट्स पर्सनालिटी. दैट्स व्हाट आई वुड से एट टाइम्स, वो दैट्स व्हाट ही सेज. या रियल मैड्रिड का गोल आप याद दिलाओगे जो किया था, ऑलमोस्ट मेड अ कमबैक एंड अ विक्ट्री फॉर अस, लेकिन दोज आर मोमेंट्स जो उसके लिए वी कैन नॉट पे हिम टू 80 grand a week, no, we cannot. TT said Malang sir to Sush. What is happening? Exactly.
एग्जैक्टली अभिषेक, तो मैं इसलिए मैं ना ब्लेम खाली प्लेयर्स को नहीं कर रहा, देयर इज अ प्रॉब्लम विद द क्लब। मतलब एक हायरार्की बन रही है, हायरार्की क्यों है? व्हाई इज देयर अ हायरार्की? एवरीवन इज एट द सेम लेवल, मेरिटोक्रेसी इज द थिंग भाई। आई वुड रेस्पेक्ट मलंग सर मोर फॉर दैट मोमेंट देन अ टीटी और अ वनर, सच में बोलता हूं अभिषेक। ओके, पोजीशन इन टॉप फॉर चेल्सी। ये क्या है मतलब, पता नहीं। हालैंड स्कोर हैट्रिक ऑफ हैट्रिक्स अगेंस्ट चेल्सी, अरे भाई संचित। लेट्स सी भाई, मतलब सर्जियो अग्वेरो वाज वन व्हिच गॉट अवे। अगेन पीपल हु मिस्ड आउट, देयर वाज अ वीडियो जो मैंने किया था अबाउट लॉस्ट ट्रांसफर वॉल्स, काफी लोग को काफी अच्छा लगा था वो वीडियो, शॉर्ट ही वीडियो था तो देखना। उसमें मैंने बताया था सर्जियो अग्वेरो व्हाई परफॉर्म्ड वेल अगेंस्ट चेल्सी ऑलवेज। अंकित भैया क्या लगता है? आई थिंक don't go for any more defenders window, go for attackers. और अटैक वाज फुल, सो फुल अगेंस्ट आर्सेनल। वेल, रू की रात मैंने बोल दिया, एक डिफेंडर चाहिए जो compete कर सके, से कंपटीशन दे सके टू अ कुलिबाली। इज देयर समवन, मे बी स्क्रीनियर एट बेस्ट, ठीक है, दैट पर्सन वी नीड टू गो फॉर। इवन किम्पेम्बे वो compete नहीं करेगा दैट लेवल, माय ओपिनियन स्क्रीनियर इज बेटर ओवरऑल। एंड मिडफील्डर में वी नीड वन पर्सन जो सिंगल पिवट खेलता है। अगर वो बेसिकली इवन इब्राहिम सागनर है, समवन लाइक दैट, इट्स ओके, इट्स ओके। And forward में we need someone who's a finisher, a proper finisher, be it even a Jonathan David or someone. मतलब that's what we need. Warner should be more motivated rather than losing his form even more. Exactly, exactly. Hello to Adri. Yes, FIFA करेंगे भाई, थोड़ा सा लेट करेंगे। अभी देख ही रहे हो। थोड़ा सा अभी पैशनेट रैंट कर रहा हूँ मैं, मोर देन रैंट, जस्ट भड़ास निकाल रहा हूँ अपना, इसलिए मैं अकेले आया हूँ जस्ट टू शेयर माय व्यूज, व्हाट आई थिंक इज द मेन प्रॉब्लम इन चेल्सी, व्हाट कैन बी द सॉल्यूशंस, आप लोग का व्यूज लेने के लिए, दिस व्हाई आई एम हियर। बट विल ट्राई एंड डू दैट ऑफ कोर्स 11:15 बजे। ऑफ कोर्स क्रिकेट मैच भी चल रहा है, तो पीपल से वहां पर आपने कवर नहीं किया आज। At this point, everything is so complicated. Just imagine the perspective of Boehly. Why he doesn't have a say, man. Simply put. Big up to Sadiq bhai. As in, कैसे हो भाई Sadiq bhai? Always good to see you. And yes, Sadiq bhai, थोड़ा सा not in a good mood. These days as a Chelsea fan, pretty sure you are in optimistic mood after that El Clasico, as well as Manchester United को चल रहा है pre-season. But again, congratulations, very good victory. और मैंने कवर किया था भाई, काफी अच्छा विक्ट्री था। rather just the motivation of those players, लग रहा है भाई players बार्सिलोना और बैक, लग रहा है वो, not just that, रियल मैड्रिड के प्लेयर्स भी भाई, they are giving it all. निखिल बोल रहे प्रीमियर लीग प्रूवन डिफेंडर टारगेट करे चेल्सी, कुंडे के पीछे लूका डीनिया एस्टन विला। वेल, लूका डीनिया हमने आई थिंक टारगेट किया था, बट ही वाज अ बिट टू हाई इन टर्म्स ऑफ प्राइस। हाँ, लेकिन ही वुड हैव बीन अ कंपेटिटर, ही वुड हैव बीन अ चैलेंजर फॉर चिलवेल्स पोजीशन। हाँ, दैट इज व्हाट वी नीडेड। प्रॉब्लम है कि मे बी यार प्लेयर्स देमसेल्व्स वांट टू बी अश्योर्ड फर्स्ट टीम फुटबॉल एज वेल, वहां पे प्रॉब्लम हो जाती है, तो इजी नहीं है। वहीं पर आई वाज एक्चुअली डिफेंडिंग एकी का मूव, पीपल डिसएग्रीड, लेकिन एनीवे इट इज व्हाट इट इज, राइट? व्हाई टूकल इज सो रिजिड, ही वाज नॉट सो रिजिड। एग्जैक्टली यार, पीएसजी में भी आई थिंक you can say he had the same kind of front three, he had the same kind of midfield most of the times, लेकिन in between games he was much more flexible. Same thing in Dortmund, he was very flexible in between games. यहाँ पर पता नहीं in between games flexible है, but in a negative mindset, like I know, like वो मुझे दिख रहा था यार, मुझे दिख रहा था आज। I know, again going back to today's game, but I'm not judging only on today's game, it's an example. आज के गेम में क्लियरली दिख रहा था जॉर्जिनियो और गैलेगर आर डूइंग वेल, दे आर डूइंग द बेस्ट, लेकिन दे नीड एन एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन सो दैट दैट थर्ड पर्सन कैन गेट द बॉल ऑफ देम व्हेन दे आर ईदर कीपिंग पोजीशन और वन इज ब्रेकिंग अ प्ले। फाइनली दे गेट इट और दे पास इट टू द फॉरवर्ड लाइन, वो मिसिंग थी, और उसके लिए मेसन माउंट शुड हैव बीन टक्ड बैक, और वो मिसिंग था फर्स्ट हाफ में मेसन माउंट ऑलमोस्ट, राइट? तो ही शुड हैव बीन टक्ड बैक, और 4-3-3 हमें जाना चाहिए था। इट्स अ क्लियर थिंग, 4-1-2-3 बोल रहा 4-3-3, वो हमें जाना चाहिए था। रीस जेम्स के बैकअप के लिए किसको लाना चाहिए? अगेन अंकुर और एवरीवन भाई, मैं तो बोलता हूँ बैकअप ही नहीं लाओ, यू नीड अ कंपेटिटर, यू नीड समवन जो चैलेंज करे रीस जेम्स को, चैलेंज करे बेन चिलवेल को, दोज आर द पीपल वी नीड। आई थिंक कॉस्टिच वुड हैव बीन अ ब्रिलियंट वन, लेकिन वो आने नहीं वाला, लेकिन वही है, वी आल्सो नीड समवन हु इज अडैप्टेबल। आई नो मैं काफी सारा बड़ा लिस्ट बोल रहा हूँ, बट वो हमारी प्लानिंग हो रही थी 2 महीने पहले, 3 महीने पहले, वो भी प्लानिंग अभी शुरू हो रही है, दैट्स द मेन प्रॉब्लम। इसलिए वी आर ट्राइंग टू गजम ट्रांसफर्स, वी आर ट्राइंग टू हाईजैक, वो चल रहे। Warner should be motivated. Everyone backed him from day one. Yeah. Is it difficult to be a decent footballer while earning 275? बिल्कुल मैन, बिल्कुल अभिषेक यार, बिंदास बोलो भाई, मैं तो बोलता हूँ बिंदास बोलो। मतलब डेफिनेटली उनका एप्लीकेशन था, वर्नर का एप्लीकेशन वाज देयर, बट आज का क्लियर था ही डजंट वांट टू बी द क्लब। इट वाज वेरी वेरी क्लियर टू मी। लेट्स सी, अगर हो सकता है टूकल काइंड ऑफ गिव्स हिम अ हेड राइट ट्रीटमेंट, हो सकता है कुछ हुआ है, देखते हैं, टाइम विल टेल। Chamak would do better than Werner.
facts. That's the comment भाई. That is the comment of the day. आज ये है मेरा, ये comment of the day. बिल्कुल 100% agreed with this. 100%. You would say भाई अंकित deluded हो गया है, but this is a reality. This is a reality. Relax Ankit bhai, Chelsea will bounce back. Akhilesh bhai, big up to you. Of course, Barca fan in the house. Congratulations for Barca win again. लेकिन हाँ, again pre-season है, same for Barca as well as for Chelsea. We will be back. लेकिन भाई इस मेंटालिटी से वी विल बी बैक इन कप कॉम्पिटिशंस, एक दो बेसिकली हेड राइट ट्रीटमेंट के बाद और बैक अगेंस्ट द वॉल में विल परफॉर्म. और उस समय मैं छाती चौड़ा भी करूंगा. मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ भाई आई एम अशेम्ड ऑफ चेल्सी, आई लव चेल्सी, ठीक है, बट शुड वी नॉट हैव मोर फाइट ऑन द पिच, play putting the Chelsea badge, that's all I'm saying. And thoda flexibility as well at the management level, right? There are a lot of crosses but no one to finish, so all we need is Sue. Yeah, I agree there, I agree. In fact wo ek option chahiye. Thank you David, that's great to hear. And of course Juventus are going to have a crazy season in my opinion. Agar Juventus basically are able to get that last signing over the board, they're already there almost, I would say. Brilliant midfield. Of course Bremer was a breakthrough, brilliant one. Lekin I still feel that they may need one more defender. I still feel that. Prats agrees, thank you. Today Rafinha just owned it. भाई पेन हो रहा था भाई as a Chelsea fan. Everyone भाई pretty sure Chelsea and Arsenal fans both, even Arsenal despite winning भाई, they would miss that Rafinha. लेकिन again just one performance है, और rather back to back performances है, उससे आप नहीं बोलोगे. बट अगेन वो एप्लीकेशन है, वो फ्लेक्सिबिलिटी, लिसनिंग टू द कोच वाला एक चीज है कि आप करना चाहते हो. दैट इज व्हाट यू नीड टू टेक ऑन पीपल, यू नीड टू बेसिकली शूट समटाइम्स. भैया सेफ बिग अप भाई, मेंबर ऑफ ऑलमाइटी ब्लूज एफसी ऑफ कोर्स. भैया टाइम से रोनाल्डो और कुंडे स्क्रीनर ले आओ, वरना इस बार टॉप 4 बहुत मुश्किल है चेल्सी का. दिख रहा है भाई. अगेन न्यूट्रल्स बोल रहे हैं भाई, न्यूट्रल्स बोल रहे तो यार मुझे, मैं एक्चुअली ज्यादा देखता हूँ वो, बिकॉज अगेन बीइंग अ चेल्सी फैन यू माइट बी सबकॉन्शियसली बायस्ड, समटाइम्स वेरी कॉन्शियसली एज वेल. लेकिन हाँ, यू स्टर्लिंग इज राइट विंगर मोर. भाई सिटी फैन सब ये मुझे बोल रहे 4-3-3 में बेस्ट है स्टर्लिंग इन द राइट विंगर. दैट्स ब्रिलियंट टू हियर, बिकॉज अगेन मैं खुद वो चाहता हूँ भाई, मैं खुद वो चाहता हूँ. और आप करो, आप अगर 4-3-3 प्रॉपर नहीं जाना चाहते हो, आप जाओ बेसिकली 4-2-1-3 और 4-2 एज इन 2-1, व्हाटएवर यू वांट टू डू. यू वांट टू बेसिकली प्ले लिटिल बिट नैरो, जाओ भाई. लेकिन आप मिडफील्ड में एक और बंदा चाहिए जो पास करे उन फॉरवर्ड लाइंस को, और फॉरवर्ड शुड बी इन द फॉरवर्ड पोजीशन. यार आप बेसिकली आप इतना नहीं भटको. बिल्कुल. ओके भाई, हंगर इज मिसिंग. अटैक स्ट्रेंथन करना मस्ट बी अ प्रायोरिटी आल्सो. इज सीएफसी डूइंग समवॉट विद रिस्पेक्ट टू वेल अजिंक्य, अभी यार भगवान ही जानता. आई डोंट नो मैन, आई रियली डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग. सच में आई नो आई मस्ट बी हैविंग अ लॉट ऑफ न्यूज़ यूज से. हाँ मेरे पास है कुछ न्यूज़, बट एट द एंड ऑफ द डे मुझे लग नहीं रहा है इतना पॉजिटिव इन द ट्रांसफर मार्केट एज वेल. इसीलिए राइट नाउ आई एम बेसिकली इन दिस मूड. हाँ कल को अगर साइन कर लेंगे आई माइट बी टोटली डिफरेंट मूड. दैट्स फुटबॉल फैन की एक लाइफ है यार, ये फुटबॉल फैन का डेफिनेशन है. सो वी आर बाउंड टू ओवर रिएक्ट, होता है. लेकिन वही है, दिस ओवर रिएक्शन इज नॉट बिकॉज ऑफ टुडे, जस्ट दिस इज बिकॉज ऑफ द एंटायर यूएस टूर, एंटायर लास्ट सीजन, और इनफैक्ट लास्ट 5 सीजंस इन द लीग. पता है Aguero was linked to Chelsea एक summer. He joined City next summer next to Haaland. Similar to Haaland, yes. Dumfries, well, I would have taken him big time. लेकिन वही है ना, Dumfries would like to start games. थोड़ा वो डिफिकल्ट हो जाता है, तो इसलिए ना बेटर होता है to kind of go for a little bit more youngish person, जो वहां पर आप उसको समझा सकते हो why they need to come to Chelsea, for example, right? Or any club for that matter. Is Hazard the magician over, or any chance we'll see the wizard back? Unfortunately, Yatin, मैं नहीं देखता Hazard the peak coming back. But he can certainly do a job. He's looking much fitter. वो एक strength element भी दिख रहा है उनमें. तो I think he can do better as a false nine. He'll be a backup at best, but not a starter in my opinion. हाँ, लेकिन you would say अगर by chance अगर उनका आ गया ना वो change of pace and whatnot, like people think that he's only a left winger, he can also play on the right hand side. Decent खेल सकता है भाई. One of the best goals of Hazard ever was from the right hand side. I don't know if you remember. Liverpool के साथ था. It was a cup game. What a goal भाई. तो that kind of thing अगर हो जाए तो यार he will be the starter for Real Madrid on the right wing. I've said it here. लेकिन शायद ही होगा. That's my real being real, just आजकल के players are not motivated enough. अगर move नहीं जमता है वो सीधा exit करने की सोचते हैं भाई. वही है भाई. I don't know man. अरे थैंक्स यार अभिषेक, थैंक्स फॉर बैकिंग मी हियर. बट हाँ, वर्नर इज ऑफसाइड लेजेंड. हाउ अबाउट ग्वार्डियोल भाई, वो खुद आना नहीं चाह रहे ना. अगेन आप बोलोगे यार फर्स्ट टीम फुटबॉल, आजकल के प्लेयर्स आर नॉट रेडी टू बी ऑन द बेंच, फाइट फॉर द प्लेस. भाई जो कॉल मैन, पीपल इफ यू रिमेंबर
Have you watched Joe Cole play football? Joe Cole, bhai, ha, you would say that he's an Englishman. He loves Chelsea to the core. You know why I'm saying Joe Cole? Bhai, Joe Cole, for majority of his Chelsea career during the first few years, वो bench पर रहते थे. He came on and he became the main player for England in the World Cup. That's how big player he became. He took on. He won a league for us. People forget that. तो आप बेंच से भी कर सकते हो प्रूव अपने आप को. Why this mentality, man? I don't know why. Before preseason, the question was who will impress Tuchel. कोई तैयार ही नहीं है भाई. मैं बोलूं एक प्लेयर जो एटलीस्ट फाइट कर रहा था लास्ट 2 प्री सीजन मैच में, कैनेडी. आप लोग बोले कि कैनेडी क्वालिटी नहीं है, बट एग्जैक्टली, बट दैट इज व्हाट टुकल नीड्स टू प्ले दोस प्लेयर्स ऑन पर्पस टू शो द एवरीवन, भाई देखिए ये लोग फाइट करे बैच के लिए एटलीस्ट. तो गिव मी दैट, मे बी दैट विल टर्न देम ऑन. मैं इतना बोल रहा हूँ बस. हेलो अंकित भाई, डू यू थिंक रियल मैड्रिड नीड्स अ बैकअप स्ट्राइकर? आई डोंट थिंक सो, आई डोंट थिंक सो. हाँ डेफिनेटली वो बेंजेमा में बहुत डिपेंड करते हैं. मैं क्यों बोल रहा हूँ आई डोंट थिंक सो, मैं एक्सप्लेन करता हूँ. बिकॉज आई थिंक एक अगर टॉप स्ट्राइकर आ जाएगा ना, थोड़ा मैनेज करना डिफिकल्ट हो जाएगा. एज मच एज एंचेलोटी इज अ वेरी गुड पीपल्स मैनेजर, तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा. तो इन माय ओपिनियन यू रादर हैव समवन ऑन द राइट हैंड साइड. आप ला सकते हो हु स्कोर्स यू गोल्स, तो इतना गोल्स पर डिपेंड नहीं करोगे ऑन द बैकअप स्ट्राइकर. तो बैकअप स्ट्राइकर में बहुत कम मिलेंगे ना, तो इसलिए हज़ार्ड इज नॉट अ बैड ऑप्शन अभी के लिए. बट डोंट वरी यार, रियल मैड्रिड का अच्छा सीजन होगा, आई एम प्रीटी श्योर. एंड सेम विद बार्सिलोना, आई वुड से बहुत क्लोज होगा उन दोनों का. जैक ग्रिलिश, ग्लोबल फैशन आइकॉन इन फ्यूचर स्टाइल डोर विनर. सुनील छेत्री, इन टर्म्स ऑफ पैशन, इन टर्म्स ऑफ ट्राई, मैं बोलता हूँ टीमो वाज वेरी क्लोज, बट सुनील छेत्री सर इज नेक्स्ट लेवल भाई, हम सब जानते हैं. कैन यू गो फॉर बास्टोनी और बास्टोनी? मैं बोलता हूँ अगेन ही इज नॉट द फिनिश्ड आर्टिकल येट. काफी इंप्रेसिव है, ही इज नॉट द फिनिश्ड आर्टिकल येट. स्क्रीनियर डेफिनेटली मैं बोलता हूँ. किम्पेम्बे, उनमें मिस्टेक्स है, बट द फैक्ट कि यार वो टूकल के अंडर खेले हैं एंड प्लेड नेक्स्ट टू थियागो सिल्वा, आई वुड स्टिल गो फॉर किम्पेम्बे अगर वो अवेलेबल हो जाते हैं एट अ वेरी हाई प्राइस. लेकिन हमें चेल्सी टैक्स देना पड़ेगा, दैट्स द रियलिटी, हम जी रहे हैं. वी शुड बी नोइंग दैट. बट मोर देन दैट हमें रीड करना है प्लेयर्स को. We need to get rid of players, and that is where we need to find clubs for them quickly. मस्त भाई लीडा, आप कैसे हो? वेल हाँ, लपोर्टा स्टेटमेंट अबाउट मेसी, इसके बारे में एक्चुअली मैं सोच रहा था एक वीडियो कर दूं कल सुबह. आई नो ऑलरेडी आ गई, थोड़ा ओल्ड हो जाएगा, लेकिन द फैक्ट इज भाई उन्होंने बोला है दैट आई ओ इट टू मेसी. जो भी हुआ है इन द कैंप नो फॉर सो मेनी इयर्स, आई ओ इट टू मेसी. और एक अनफिनिश्ड काइंड ऑफ अ स्टोरी है. अनफिनिश्ड स्टोरी है क्यों? बिकॉज यार अ प्लेयर, अ लेजेंड लाइक मेसी फॉर बार्सिलोना, जो बेसिकली एक ऐसा प्लेयर है जो गेव एवरीथिंग टू बार्सिलोना, एंड फॉर हिम टू लीव द वे ही डिड, ही डजंट डिजर्व इट. तो दिस स्टोरी इज स्टिल अनफिनिश्ड. तो यू नेवर नो, ही मे कम बैक, एब्सोल्युटली आ सकते हैं. People are saying that maybe after PSG he'll come back just for one season in his last season in his footballing career. वो हो सकता है definitely. Or you can say he might go to Argentina and play there because of Maradona and the respect he has. तो दोनों में से एक is quite likely in my opinion. लेकिन भाई I don't disagree with that at all. By Laporta, I understand totally that Messi has given lots to Barcelona, but at the end of the day, club is bigger than the player, so they should be thinking about the club right now because you are in a good direction, Barcelona, I would say. Please Chelsea go for Pau Torres. बिल्कुल बिल्कुल. And yes, let's get to 100 likes quickly. यार 100 likes भी नहीं है आज, ये थोड़ा सा अजीब लग रहा है. But anyway, ओके आ गया है भाई अपना दोस्त चैट में. एक सेकंड में देख रहा हूँ भाई. थैंक यू सिटी हब, बिग अप टू यू भाई, मच लव भाई. इतने इतने जॉबलेस होते लोग आ जाते हैं भाई, क्या क्या कर दें, इतने सारे अकाउंट्स भी बना रहे. कोई नहीं, बनाइए भाई, हमारे सब्सक्राइबर काउंट इंक्रीज हो रहे, टेंशन नहीं है. बट बाद में अनसब्सक्राइब मत करना, अगर इतना ही गट्स है तो आइए मुझे डीएम करिए. जो 2 लोग कर रहे हो, एक जन कर रहा है जो भी. एनीवे, रोनाल्डो एनी अपडेट? भाई लीडा अभी तक अपडेट नहीं है, अभी तक नॉट रियली एनी अपडेट. बट अंकित भैया अपडेट ऑन कुंडे, फ्लेम बॉय, लेट्स मूव ऑन ब्रो, लेट्स मूव ऑन. मतलब फॉर मी अपडेट यही है. फेब्रिशियो का ट्वीट मैंने रीड किया था. इट्स अबाउट देम वेटिंग फॉर द बार्सा ऑफर. As of now, it has to be the fact that definitely Chelsea has the formal offer. Uh, it is verbally kind of okay कर दिया गया, but formally they cannot until they know that Barcelona are not bidding. Or as per the reports, the bid is going to be around 45 million Barca का. Chelsea का is 55 million. तो कम होने वाला है, but they are quite confident. That is the report. अब वो कितना होगा only Sevilla knows, because Sevilla at the end of the day have to accept. हाँ, मे बी आप बोलोगे सेविया क्यों ही तो नाखुश करना चाहिए कुंडे को, बट व्हाई नॉट? कुंडे इज नॉट अ लेजेंड. व्हाई आर वी ऑल ट्रीटिंग कुंडे लाइक अ वर्जिल वैन डाइक? आई हैव नो आइडिया. एनीवे, सो यहाँ पर देखते हैं. आउट ऑफ 4 लीग्स कांट स्काउट सम गुड विंगर्स डीएम. भाई आप लोग, मैन, थैंक यू फॉर द कमेंट. यू गाइस आर बेटर स्काउट्स फॉर मी. दैट्स अ रियलिटी.
दैट इज द रियलिटी एट दिस पॉइंट इन टाइम। एंड हम बेटर स्काउट कर सकते हैं यार, मतलब हमने एक साल स्काउट किया और लाया साउल को ऑन लोन लास्ट सीजन। Imagine, not that he's bad, but I'm just saying, man. As in, that's like the 8 of the last 10 shots have hit the post. Wow, what a stat, Sahaj. Brilliant stat, यार. लेकिन Valverde भाई अच्छा लगा था आज. Um, okay, fair enough, Vishal, fair enough. Thank you for letting me know. Okay, Frankie आएगा कि नहीं? थक गया हो ब्रो. भाई देवेश, फ्रेंकी, आई थिंक बोथ इन मैनचेस्टर एंड चेल्सी, ऐसा नहीं है कि फ्रेंकी के आने या नहीं आने से बेसिकली आप लीग में टॉप 4 आओगे या नहीं आओगे. आई थिंक मोर देन दैट इट्स अ प्लेयर मेंटालिटी, इट्स अबाउट अडेप्टिंग टू व्हाट द कोच नीड्स, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है. बट डेफिनेटली वो हेल्प करता है, मैं नहीं बोलने वाला. लग रहा है मुझे कि यार फ्रेंकी आने वाला है इन वन ऑफ दीस क्लब्स, इज व्हाट आई एम गेसिंग, स्पेशली आफ्टर टुडे. यार हो सकता है टूकल माइट जस्ट थिंक कि भाई हमारी मिडफील्ड को एक और मिडफील्डर चाहिए. But let's be real. Yeah, Kovacic is injury prone. That's also a reason. I love him, but you know it. The lesson learned from this transfer window is to have a proper sporting project and also appointing a proper scouting director. बिल्कुल बिल्कुल दिव्यांशु, वेरी वेल कमेंटेड. यहाँ पर Valverde and Courtois was good for Madrid. Yeah, बिल्कुल. और people who have not checked out, do check out my review as well. मैंने short review किया है on that game और Courtois definitely भाई. Two players you love from current Bayern squad, tell us all time as well. ओके, बायन स्क्वाड में भाई देयर नो सीक्रेट. एक जन तो मैंने बताया, आई नो आप बोलोगे यार बायन स्क्वाड में से पिक करो, थोड़ा नाइंसाफी है. बट आई थिंक वन प्लेयर आई रियली लाइक एंड आई थिंक इज अंडररेटेड एज अ यंगस्टर इज ग्रावेनबर्ग, रायन ग्रावेनबर्ग. इवन फॉर डच टीम इन माय ओपिनियन वो स्टार्ट करना चाहिए. ठीक है, तो दैट इज व्हाट माय ओपिनियन इज. ग्रावेनबर्ग इज समथिंग दैट ही कैन बी अ रियल नेक्स्ट बिग थिंग इन माय ओपिनियन. एक और प्लेयर मैं बोलूंगा करेंटली इज समवन दैट आई रियली लाइक. आप सोचोगे मैं किबिक क्या मुलर का नाम लेने वाला हूँ प्रोबेबली, बट फॉर मी इट हैज टू बी गोरेट्स्का. गोरेट्स्का टॉक अबाउट एप्लीकेशन, टॉक अबाउट एन एप्लीकेशन. भाई इसने लॉकडाउन के समय इतना वर्कआउट किया, इतना वर्कआउट किया कि भाई बन गया एकदम. दैट इज व्हाट इट इज, मोटिवेशन. ही वांटेड टू बिकम दैट, यू नो, दैट एलीट लेवल प्लेयर, और ही इज काइंड ऑफ बिकम विद दैट एज वेल. वो दिखता है उसका. तो आई वुड से गोरेट्स्का फॉर मी. तो दोनों ही मिडफील्डर्स जा रहा हूं मैं, आई नो. But apart from that, by all time, I have, I think, मनाबस, मुझे क्या आपने देखा था हमारा गोट स्ट्रीम एक ऑन ऑलमाइटी स्पोर्ट्स प्लस, वहां पर एक्चुअली आई टोल्ड दैट प्लेयर्स नेम वाज विल. बायन का ऑल टाइम, यू नो व्हाट, एक्चुअली मैं बोलता हूं दो. एक प्लेयर काफी अंडररेटेड, बट एक प्लेयर जो बायन के लिए काफी काफी लेजेंडरी प्लेयर है. आप बोलोगे फिलिप लाम. हाँ, फिलिप लाम वाज वेरी क्लोज. बट फॉर मी ओलिवर कान आल्सो वाज क्लोज बाय द वे. फॉर मी और बायन के लिए ऑल टाइम मैं चाहता था बास्टियन श्वाइनस्टाइगर. समवन जो यार प्रॉब्लम नहीं करता था, कहीं भी खेलता था भाई पिच पे, कहीं भी मिडफील्ड या वाइड फॉरवर्ड लाइन कहीं भी खेल सकता था. बास्टियन श्वाइनस्टाइगर टिपिकल लीडर वो था इन इस प्राइम. ठीक है, ही वाज रियली समवन हु गॉट इन. बास्टियन श्वाइनस्टाइगर वाज द वन. एंड हु एल्स, आई थिंक मे बी आप और भी देयर वर लॉट. हाँ, एक और अंडररेटेड प्लेयर मैं जो बोलने वाला था बायन का, ओवन हारग्रीव्स. आई डोंट थिंक ओवन हारग्रीव्स एज अ प्लेयर इज सेलिब्रेटेड. भाई ये इंटरनेट का क्या हो रहा है आज, पता नहीं. सब लोग यार इंटरनेट दिख, आपको दिख रहा है ना चेहरा, बोल दीजिए. I hope it's okay. But yes, Ribery, yeah, definitely Ribery is one, and no Neuer. Yeah, Neuer is a path breaker in terms of जो role play करता है definitely. लेकिन जैसे मैं बोलता हूँ ना, there was a very long time जहाँ पर Neuer was easily the best in the world in goalkeeping in my opinion. तो वहां पर I don't like such a player. Not nothing against him, nothing against any player, but मेरा liking नहीं होता towards that player. I'm trying to say that. Just that. It's not disliking. Don't get it wrong. But हाँ, Musiala also a great player. By Musiala, as much as he's a great player, I think he still has one more level to go in my opinion. But yeah, especially after Jan attack has underperformed, we have become painful to watch like Conte's second season. भाई बिल्कुल बिल्कुल यहीं पर भाई Tuchel kind of said it in his press conference. बहुत सारा चीज आज खुलासा किया भाई Tuchel ने. आप आज पोस्ट मैच इंटरव्यू आप देखिए, Tuchel ने बहुत सारा चीज बोला है. And yes, he is also partly to be blamed. No two ways about it. There should have been better planning. There should have been, you know, more flexibility. But at the end of the day, bhai, it comes down to basically your club backing you and the players backing you. तो इसलिए मैं थोड़ा सा डर रहा हूँ भाई about basically is it the same what happened after Conte's second season? I hope not. I hope not. Always remember Laporta is a politician. Philip Lahm, yeah, leader legend. FIFA होगा या FIFA करेंगे भाई. चलो अभी सेटअप ही करता हूँ. तो आई नो मैं काफी बात कर रहा हूँ. अगेन people watching later on as well, do let me know in the comment section.
आपको क्या लगता है? And yes, this is not supposed to be just a rant, but yeah, we need players like Diego Costa in his first couple of seasons for Chelsea. We need that fight. We need that hunger. Hunger कहाँ है भाई? Get hungry, baby. That's what I would say. Come on, make them hungry. Okay. Wow, nice. चलो अंकित भैया, we need direct wingers who can dribble and get past defenders. मतलब भाई, मतलब in every kind of, you know, kind of what do you say, region of the pitch, we need one player minimum, and we need quality as well, or we need that player to be a trier hungry player as well, and that's not easy to get. और उसके लिए प्लानिंग अच्छी होनी चाहिए. So it's kind of एक डोमिनो इफेक्ट है जो हमने मिस कर दिया है. बट एट द एंड ऑफ द डे भाई, अभी के लिए टूकल बैक हिम, but players need to back him more than even us, I would say, right? Yeah, pathetic is a word, absolutely. इसलिए मैं रिएक्ट कर रहा हूँ, इसलिए हमने स्ट्रीम किया है. हाँ, आप बोलोगे यार it has been a problem for a long time, but this is like okay, क्लियरली पता चल गया there is more to it than what I've been thinking. मैं प्री सीजन बोलकर नहीं मना कर सकता खाली. हाँ, ये तो ले लिया था. Many players looking to leave their mind, there are somewhere else. बिल्कुल, मतलब we need to get rid of those players, be it even a Vitesse or whatever. भाई उनको दिखाइए आप अगर. और यार नया ओनरशिप है, we will take some loss initially financially, that's okay, and anyway Boehly for the long run, तो वो करिए थोड़ा. If Tuchel feels that some player is feeling like that, तो please, get him off. Yeah, Doku का ऐसा है ना, first of all, is injury prone. Doku is injury prone from what I know, and of course they are not consistent week in week out. Damsgaard is a very brilliant shot, Satvik. वो मेरे में I don't know, I'm not getting it. Maybe आप बोल सकते हो physical element, that's what in Premier League तो इतना बोल सकता हूँ. I don't know about other leagues. For Damsgaard, I don't think link हुआ है, लेकिन Damsgaard has been into Premier League, लेकिन थोड़ा ही है Damsgaard का in terms of physical element थोड़ा सा कम लगता है for people. But again, I think he's a good player. Yeah, मैंने किया भी है CFC Blues, but again he did save us to some extent, so I won't criticize him as much. Yeah, बिल्कुल ownership was the best, so we didn't concentrate there, and now we need to get more players, more backups, more player backups who are competing. That's exactly a Chelsea rehab stream. Ankit bhaiya, well, thank you यार, thank you. But again, अभिषेक sorry, मैंने आपका मैसेज देखा था और उसी समय मुझे याद है मैं बारसा रियल का जस्ट आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग आई डिड द रिव्यू. And I kind of related very well. I exactly get, because मुझे वो feel हो रही थी भाई, we need to get something going. There has to be a proper roadmap. There has to be a roadmap कि भाई पहले get out these 5-6 players. You get out these players no matter where. Get out in the 5-6 days. We need to get out these players. Then go all out for the targets. Then targets भी ऐसे जाओ जहां पर you need to have players who are motivated to play for Chelsea Football Club. Why they are motivated, you need to know. ठीक है, जब वो आए, be flexible with your tactics. Give them what they want as well. It is a bit of both in terms of positions. तो काफी चीज है. So this is my solution as a Chelsea fan who's watching for 22 years Chelsea at least. But definitely I hope आप लोग को अच्छा लगा this thing, and I loved all your comments. अभी तक it's in the air, Devesh. It depends on maybe if we are getting maybe a De Jong on a very cheap, maybe we might get tempted with Aspi going. As of now, because De Jong can play as a third centre back. You heard it here, yes. But maybe if you are getting skinnier and on cheap as well, वो नहीं होने वाला, इसलिए मैं बोल रहा हूँ. Let's be honest, real वही लग रहा है अभी, Aspi is going to stay, और रहना भी चाहिए because we don't have many bodies in center half, especially हम अगर 3 at the back जाते. Generally also someone who can play right wing back as a backup. Not a great option, लेकिन he's a captain leader legend, so let's actually back him as well for now. But yes, people, 1.5 घंटे हो गए करीबन, काफी बोल दिया मैंने. Hopefully आप लोग like कर दियो, and do not forget to subscribe. It's absolutely free of cost, and yes, we are monetized on both our channels. If you feel that you can afford a super chat and we deserve it, go for it, because it'll go back to the channel to upgrade everything in the channel, which we are already working on, as you can see. But definitely do not forget, we are live also on Almighty Sports Plus this later in the night. So midnight stream हो जाए वहां पर, everyone, come on. FIFA midnight stream with transfers and maybe cricket हो सकता है last overs में कुछ interesting हो वापस से. So we'll kind of have fun वहां पर. I'll set up the stream. Hopefully maximum 11:30 बजे से हम शुरू करेंगे on Almighty Sports Plus. And do not forget, I love you all and keep supporting. Thank you.